Presenting sponsor. Co-powered by Panasonic Smart AC for healthier homes. Supported by इम्फा 60 वर्षर विश्वास एवं रूपांतर. Associate sponsors. जिंदल पैंथर TNT रीबार. Paradip Phosphates Limited. सामना करिछे एबे धीरे धीरे अर्थनीतिर गाड़ी तार पटरी पुणी थे धरला धीरे धीरे आम आग को चलीचे आग को आम केमती चलवा से भी आम गोटे निश्चित भाव में बड़ आह्वान ओटीवी वार्षिक चिंतन अधिवेशन फोरसाइट 2022 पुणी थे मुझे कही रखे जे आमर चलित वर्षर जहाँ संदर्भ रही थीम रही ऑफ द कन्वेंशन दिस विनर्स एंड द डिसएडवांटेज इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. एमती गोटे परिवर्तित सामाजिक एवं अर्थनैतिक तथा राजनैतिक धारा उपरे विचार आलोचना करने को आम मैंने समस्ते आज ए मंच रे एकाठी होइछे. ओटीवी फोरसाइट 2022 चेंजिंग टाइम्स चेंजिंग माइंड्स. तेबे चलंतु आरंभ करबा आजिर आमर ई कार्यक्रम. मो मंच उपर को आसवा पई अनुरोध करी ओडिशा टेलीविजन नेटवर्क मैनेजिंग डायरेक्टर तथा को फाउंडर जगी मंगत पंडा को. May I request you, ma'am, to please deliver the welcome address. Thank you. नमस्कार. OTV Foresight 2022 को मु आपण मानकु स्वागत जनाउछि. प्रति वर्ष परि ए वर्षर फोरसाइट रे अनेक क्षेत्रु ओडिशा और ओडिशा बाहर बिजनेस आउ अन्य क्षेत्रु विशिष्ट व्यक्ति आम संगे अछंती. ए वर्ष आमर फोकस भारत रो इकोनॉमी और बिजनेस रहिबो जेहेतु कोविड समय रे आम देश आउ ओडिशा रो इकोनॉमी उपरे बेस प्रभाव पड़िछि किंतु ता सत्ते भी केवल एही वर्ष रे अनेक नुआ उद्योग आरंभ हेछि एवं ता भितरे अनेक उद्योग 1 बिलियन रो वैल्यूएशन रे को पहुंची पारिछि. एटा आम देश पय एक गर्वर कथा. आमर आजिरो फोरसाइट रो थीम होछि कोविड विनर्स एंड द डिसएडवांटेज इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. आउ एही थीम उपरे चर्चा करिवे आमर आजिरो अतिथि. ओपनिंग सेशन रे आमर मुख्य अतिथि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह तोमार जी और सद्गुरु श्री जगी वासुदेवन जी तांको मंतव्य रखिबे. आउ तापरे दिन सारा आमे अनेक विशिष्ट व्यक्तिंकर मंतव्य सुनिबु. आमे आशा करूछु कि आपण माने ए वर्षर डिस्कशन भलो पाइबे. आउ शेषरे मु आपण मानकु आम ओडिशा स्पीकर्स आउ आम स्पीकर्स जो बाहरु आछंती तांको विषय दीपद कहिबी. आमर पोस्ट लंच सेशन रे डिबेट रे पार्टिसिपेट करिवे श्री प्रताप सारंगी ऑनरेबल MP बालेश्वर, श्री गणेश्वर बेहरा सीनियर कांग्रेस लीडर, श्री नारायण रेड्डी सीनियर CPI लीडर एंड श्री संदीप मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट. आउ ए सेशन को मॉडरेट करिवे आमर सीनियर एडिटर राधा माधव मिश्रा. आमर आज अतिथि जो बाहर आछंती से होउछंती श्री गोपाल कृष्ण, श्री हरित नागपाल, श्री आदित्य प्रकाश और हुमा कुरैशी. मु समस्त को फोरसाइट 2020 को स्वागत करुछि. तांकु एठी उपस्थित अतिथि और आमर स्पॉन्सर्स को मु धन्यवाद भी जनाउछि एवं सबुठु इम्पोर्टेंट आमर दर्शक मानकु जो माने आमको ओटीवी को दीर्घ 25 वर्ष धरी नंबर 1 चैनल रो मान्यता दे आछंती ताकु विशेष धन्यवाद. जय जगन्नाथ. A very good morning to all of you and a very warm welcome. A special welcome to our chief guest, Honorable Union Minister for Agriculture, Shri Narendra Singh Tomar ji, who will join us virtually from UP since he has been busy campaigning in UP. Tomar ji, मैं OTV की तरफ से और सब सदस्य की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी कहती हूँ क्योंकि आपने आपके बहुमूल्य समय से हमें थोड़ा समय दिया. I take this opportunity to extend a very warm welcome
to our speakers from outside Odisha today. Mr. Gopal Krishnan, who is Country Head Marketing Function and Product Group Head, TCS Ion. Mr. Harit Nagpal, MD and CEO of Tata Play. Mr. Aditya Prakash, CEO of Esotech. And Huma Qureshi, Bollywood actress. Let me start this session with a quote that resonates with the topic today, as well as the COVID era that we have been living in for the last 2 years. We don't always get over or move on from our trauma. We are forced to make space for it, we carry it, we learn to live with it. And sometimes we thrive in spite of it. And this is what defines the business outliers of the COVID era. The businesses that just did not survive the pandemic, but adapted to thrive during the pandemic. Businesses that turned adversity into their biggest opportunity. This will be the focus of today's Foresight, COVID, winners and the disadvantaged in the new world order. It has been a while since we have had business leaders speak on this forum at Foresight. So standing here today, I feel now is the most important time to do so. If Foresight 2021 was a celebration of the undying human spirit, Foresight 2022 will honor human potential to grow. In the last 2 years, the ever-growing list of emerging trends in digital and healthcare transformation, growth of online education, vaccine development, and so forth, all point towards that one secret of success, that is adaptation and innovation, which I think most businesses swear by, but this especially holds true for startups, as the culture of innovation is the very premise on which the startup ecosystem is built. Until a couple of years ago, unicorn was an elusive milestone for startups, but in what can be termed as a blockbuster year, 2021 saw creation of 42 unicorns in India alone. India is now home to the third highest number of unicorns in the world after US and China, surpassing UK. And this is indeed a proud moment for us in India. The world is unlikely to return to what it was in the pre-COVID era. And as history has shown us, choices made during crisis can shape the world for decades to come. What will remain is critical is the need for collective action to build economies that deliver inclusive economic growth, prosperity, and safety for all. I do hope that you find today's sessions informative and engaging. Finally, I would like to thank all of you here, and especially our viewers who have supported OTV for the last 25 years and have held us at the #1 position continuously for 25 years. Thank you. Namaskar. Jai Jagannath. Thank you so much, ma'am, for the warm words of welcome. स्वागत अभिभाषण ପାଇଁ बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती जगी मंगत पंडा महोदया. तो एबे आमे आरंभ करबा ओटीवी फोरसाइट 2022 रो आजिर आमर प्रथम अधिवेशन. आम सहित दिल्ली रु जोड़ी होछंती केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर. श्री तोमर एबे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रो दायित्व रे रहिछंती. कार्यव्यस्तता जोगु श्री तोमर आम सहित फिजिकली तो उपस्थित रही पारु नाहंती, किंतु ही इज गोइंग टू प्रेजेंट हिज इनागुरल एड्रेस वर्चुअली. तो टॉपिक बा जो संदर्भ रही आलोच्य विषय वस्तु जहाँ रही इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ड्यू टू पैंडेमिक, अर्थात महामारी जोगु कृषि एवं कृषकों उपरे पड़िथिबा प्रभाव. It is an absolute honor to have with us as our chief guest, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Shri Narendra Singh Tomar ji. May I request you, sir, to please honor us with the inaugural address. सभी को नमस्कार. आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित, हम सबके आदर और श्रद्धा के केंद्र, परम पूज्य
सदगुरु श्री जग्गी वासुदेवन जी, कार्यक्रम की आयोजक और OTV की MD आदरणीय श्रीमती जग्गी मंगत पांडा जी, आदरणीय सारंगी जी, आदरणीय गणेश्वर मेहरा जी, आदरणीय नारायण रेड्डी जी, आदरणीय गोपाल कृष्ण जी, आदरणीय हरित नागपाल जी, संदीप जी, आदित्य प्रकाश जी और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े सभी सम्मानित महानुभाव, बहनें और उपस्थित सज्जनों, आज OTV अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे OTV परिवार को और जो दर्शकों का एक बड़ा परिवार होता है, उन सब को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। OTV उड़ीसा का बहुत अच्छा और लोकप्रिय चैनल है और 25 वर्ष सफलतापूर्वक OTV ने अपनी यात्रा को पूर्ण किया है। किसी भी संस्था, व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित उद्देश्य को लेकर 25 वर्ष की पूर्णता यह निश्चित रूप से बहुत ही सुखद अवसर होता है। इस सुखद अवसर पर आज OTV परिवार उपस्थित है। उनके मन में जो उल्लास है, खुशी है, उसको मैं महसूस कर सकता हूँ और उनके आनंद में भागीदार होते हुए मुझे इस मौके पर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ जय पांडा जी को, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में रहने के लिए कहा और OTV परिवार के हजारों हजार लोगों के रूबरू होने का ये अवसर उन्होंने मुझे दिया। उसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में सदगुरु जी जुड़े हुए हैं। जहाँ पर सदगुरु जी की मौजूदगी हो, यह निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है। हम सभी जानते हैं सदगुरु जी हमारे देश के बड़े आध्यात्मिक संतों में हैं। पूरा देश और दुनिया उन्हें जानती है, लेकिन संतत्व के रहते हुए भी आम व्यक्ति का योग्य रूप से निर्माण हो, वह सद्मार्ग पर चले और पृथ्वी और समाज के सामने जो विद्यमान चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम कैसे स्वीकारें, उस पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, प्रकृति की भी रक्षा करें, देश की भी रक्षा करें, आध्यात्म की उन्नति करें और अपने जीवन को सार्थक करें। इस दृष्टि से जो योगी जी का योगदान है, सदगुरु जी की भूमिका है, उस भूमिका को इस अवसर पर मैं बहुत प्रणाम करना चाहता हूं और उनके चरणों में निश्चित रूप से नमन करता हूं। OTV एक उड़िया क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवार है। इस परिवार ने 1997 में अपनी यात्रा प्रारंभ की और लोकतंत्र में जो मीडिया की भूमिका है, उस भूमिका को ठीक प्रकार से निभाने में
निश्चित रूप से सफलता अर्जित की है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में मीडिया का बहुत महत्व है। मीडिया यदि देश को सकारात्मक दिशा देना चाहे तो दिशा सकारात्मक भी हो सकती है, और उसको अपनी लोकप्रियता के लिए नकारात्मक रुख अख्तियार करे तो नकारात्मक दिशा भी हो सकती है। दोनों के ही देश पर फर्क रहने वाले हैं, और इसलिए हमेशा कोशिश ये रहना चाहिए कि सच को रखते हुए हमारी दिशा सकारात्मक हो, तो निश्चित रूप से चैनल के लिए भी महत्व होता है, और देश के प्रति भी जो हमारी जवाबदारी है उस जवाबदारी का निर्वहन करने में निश्चित रूप से हम सफल होते हैं। मुझे प्रसन्नता है OTV उड़ीसा के क्षेत्र में अपनी इसी प्रकार की सच्चाई से ओतप्रोत सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करता है, और इसी भूमिका के परिणाम स्वरूप आज वह उड़ीसा का प्रथम स्थान का चैनल है। सबसे अधिक लोग OTV को देखने में अपने को अच्छा अनुभव महसूस करते हैं। यह मैं समझता हूँ कि OTV परिवार के प्रयत्नों की बड़ी सफलता है, और इस सफलता को मैं निश्चित रूप से सलाम करता हूँ। आज हम सब भारतवासियों के लिए एक तौर से महत्वपूर्ण अवसर है। हम सब 21वीं सदी में हैं, और स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे 21वीं सदी एशिया की सदी होगी। और इसलिए जब हम देश को और पूरी दुनिया के मानचित्र पर अपने हिंदुस्तान को देखते हैं तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है वह वाक्य एक दिन निश्चित रूप से सच होने वाला है। और इस प्रक्रिया में पूरा देश आज लग गया है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो यह भी उसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक समय था जब हम दूसरों की चीज़ों पर ही गौरव करते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जब यह कहा कि लोकल के लिए वोकल हो और अपनी पर गौरव करो, तो देश में निश्चित रूप से एक अलग प्रकार की स्पिरिट पैदा हुई। और आपने अनुभव किया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद जितने भी अभियान अपने हाथ में लिए, उनकी लगातार यह कोशिश रही कि इसमें जन भागीदारी हो और जनता के द्वारा इन अभियानों को पूर्णता मिले। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक लंबे कालखंड के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जिनकी देश में अपील है, अपील की स्वीकारोक्ति है, और उसके परिणाम स्वरूप अच्छा प्रसाद आज हमें सबको मिल रहा है। यह हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। पिछले दिनों आप सबको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की बात कही थी, तो पूरा देश ऐसे मानो अपना काम है उठकर खड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप देश ODF हुआ। अब ODF प्लस की ओर हम बढ़ रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी स्वच्छता बढ़े, इस दिशा में हमारा प्रयत्न हो रहा है। इस दिशा में टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग हो सके, इस दिशा में भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। और स्वच्छता का जो उच्चतम मानदंड है उसको भारत प्राप्त करे, इस दिशा में पूरा देश जागरूक है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबकी भागीदारी आज इस दिशा में निश्चित रूप से बढ़ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले हम सबको ध्यान में है, हम कोरोना संकट से उबरते जा रहे हैं। जब कोरोना महामारी का विषय था तो निश्चित रूप से पूरा देश भी चिंतित था,
और दुनिया भी चिंतित थी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने समय रहते कदम उठाए, उन कदमों के साथ जनता जुड़ी और हमने अपने देश के अनुशासन को भी मजबूत किया, अनुशासन का पालन भी किया। जो साधन खड़े करने चाहिए थे समय रहते उन साधनों को खड़ा किया। उन सब साधनों को खड़ा करने में प्रधानमंत्री से लेकर आम जनता तक की भागीदारी सुनिश्चित हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम तौर पर हम सब जानते हैं कि पोलियो का वैक्सीन मिलने में भारत को 20 वर्ष लग गए थे। जब ये कोरोना महामारी थी तो ऐसा लगता था इसका वैक्सीन हमें मिलेगा तो पता नहीं कितने साल लगेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया, भारत ने अपना वैक्सीन बनाया, दुनिया में उसे मान्यता प्राप्त हुई और आज हम यह गौरव के साथ कह सकते हैं कि 250 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन का डोज लगाने में सफलता प्राप्त की है। जो इलाज की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत सरकार और राज्य सरकारों ने खड़ा करने का एक सदप्रयत्न किया है। यह हम सब के लिए निश्चित रूप से इस बात का परिचायक है कि अब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। भारत में वो सब कुछ है जो दुनिया में उपलब्ध है, बस भारत को जगाने की आवश्यकता है। भारत इस दिशा में जग रहा है, आगे बढ़ रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि विकास की समग्र विकास और संतुलित विकास इस कल्पना को साकार करना आवश्यक होता है। एक लंबे कालखंड तक विकास की दृष्टि से भी असंतुलन खड़ा हो गया था। हम उड़ीसा राज्य को देखें, झारखंड राज्य को देखें, छत्तीसगढ़ राज्य को देखें। अब ये राज्य ऐसे देखें तो खनिज संपदा से सबसे अमीर राज्य हैं, लेकिन अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा गरीबी इन्हीं राज्यों में है। और इसलिए पिछले बार भारत सरकार ने MMDR एक्ट को अमेंड किया और जो माइंस हैं उनको ऑक्शन पर लेके आए। इसके कारण आज राज्य सरकारों को अच्छा पैसा मिल रहा है। राज्य सरकारें उस पैसे को गरीब के कल्याण में लगा रही हैं, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है और इन क्षेत्रों में विशेष रूप से विकास का संतुलन बन सके, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे IIM और IIT खोलने का मामला हो, चाहे एम्स चालू करने का मामला हो, चाहे और लॉजिस्टिक सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो। इस असंतुलन को समाप्त करना और इन क्षेत्रों में विकास के काम खड़े करना यह मोदी सरकार की निश्चित रूप से प्राथमिकता है। हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र एक तौर से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूरस्थ है, दुर्गम है। लंबे समय से पैसा होने के बाद भी वह विकास की बाढ़ जो रहा था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले अपने कार्यकाल में लगातार इस बात की कोशिश की नॉर्थ ईस्ट के हर छोटे से छोटे प्रांत में वो जाएं। एक बार नहीं कई बार गए और उन्होंने सुनिश्चित किया केंद्र सरकार का हर मंत्री नॉर्थ ईस्ट के राज्य में जाए, वहाँ पर अपने विभाग के माध्यम से जो किया जा सकता है वो करे। और इस बार के बजट में भी अगर हम देखेंगे तो 1500 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग से प्रावधान करके रखा हुआ है। PM गति शक्ति योजना के माध्यम से कोशिश है कि देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, रोजगार के अवसर खड़े हों। लगभग सरकार इस पर 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। इस बार भारत सरकार का बजट यह भी निश्चित रूप से 14% की वृद्धि करके रखा गया है और हर क्षेत्र में यह कोशिश की गई है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो गरीब का क्षेत्र हो, चाहे वो नगरीय विकास हो, सभी क्षेत्रों में
समग्र रूप से व्यवस्था बन सके। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब हमारे आधी आबादी बैंकिंग से ही जुड़ी नहीं थी। प्रधानमंत्री ने जनधन योजना प्रारंभ की। जनधन योजना के माध्यम से लोगों को अकाउंट खुले। आज अकाउंट खुल गए हैं, इसके कारण बड़ा बदलाव आया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हर किसान को 6,000 रुपया वार्षिक आय सहायता मिलती है। अभी तक इस योजना के माध्यम से भारत सरकार ने 11.5 करोड़ किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया उनके खातों में जमा किया है। अब सोचिए कि अगर जनधन अकाउंट नहीं होता, आधी आबादी बैंकिंग से जुड़ी नहीं होती, तो आज ये डीबीटी के माध्यम से 1,82,000 करोड़ रुपया हम कैसे पहुंचा पाते। ये 1,82,000 करोड़ रुपया प्राप्त करने में किसान को कितनी मुश्किलात भुगतना पड़ती। तो ऐसी स्थिति में आज पारदर्शिता के लिए भी जो काम हो रहा है वह भी अपने आप में अभूतपूर्व है। जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, निश्चित रूप से हम सब भली भांति जानते हैं, कृषि का क्षेत्र भारतवर्ष के लिए मेरुदंड के समान है। कृषि की अर्थव्यवस्था यह हमारे देश की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। जब कभी भी देश पर संकट आया है या प्रतिकूल परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, तो इस अर्थव्यवस्था ने भारत का साथ दिया है। पहले भी एक बार मंदी का दौर आया था, तब भी कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने हमारे देश को खड़ा रहने में मदद की थी। और अभी हाल ही में कोविड संकट आया, तो इसमें भी दुनिया की तमाम सारी अर्थव्यवस्थाएं हिल गईं। बड़े बड़े स्वचालित कारखाने वो बंद हो गए, लेकिन कृषि की अर्थव्यवस्था ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे किसान ने घनघोर परिश्रम किया। जब लॉकडाउन था तब फसल कटाई के लिए खड़ी थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र को आवश्यक छूट प्रदान की। किसान ने फसल की कटाई का काम किया। क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाकर भारत सरकार ने उनके उत्पादन को खरीदने का काम किया। और मैं उस समय देख रहा था कि कटाई हो गई है, खरीद हो गई है, लेकिन लोग भयग्रस्त हैं, लोग निकल नहीं रहे हैं, तो ग्रीष्मकालीन फसलों की क्या स्थिति बनेगी। लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि किसान ने बम्पर पैदावार की, सरकार ने पहले से अधिक खरीद की और किसान ने ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें थीं उनकी बुआई भी गत वर्ष से अधिक की। यह हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानी की जो ताकत है, यह इस बात का परिचायक है कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन अगर ये मेरुदंड मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते ही रहेंगे और ये मेरुदंड हमारी हमेशा सहायता करेगा। आज कृषि के क्षेत्र को और आगे बढ़ाने और मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर किसानों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज खाद्यान्न में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर ही नहीं, सरप्लस कंट्री हैं। कृषि के क्षेत्र के जितने उत्पाद हैं, दुनिया की प्रतिस्पर्धा में हम देखें तो हम या तो पहले पायदान पर खड़े हैं या हम दूसरे पायदान पर खड़े हैं। निर्यात की स्थिति को भी अगर हम देखें तो कोविड के इस कालखंड में भी निर्यात बढ़ा है और पहले 10 देशों में भारत का स्थान बना है। और हमारी कोशिश है कि निर्यात की दृष्टि से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता इतनी बढ़े कि आने वाले कल में हम पहले 5 देशों में भारत शामिल हो जाए निर्यात की दृष्टि से। यह भारत सरकार की निश्चित रूप से कोशिश है। कृषि के क्षेत्र को सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए देश में 10,000 नए एफपीओ जो छोटे किसानों के लिए एक तौर से बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने जा रही है। इस पर काम प्रारंभ हो गया है।
इसके नतीजे भी निश्चित रूप से आने वाले कल में देश की खेती को मिलने वाले हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में हो, इसके लिए ड्रोन पॉलिसी आई और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने भी कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे उपयोग हो सकता है इसके लिए अपने नियम जारी कर दिए, एसओपी जारी कर दिए और इस पर भी काम प्रारंभ हो रहा है। इससे निश्चित रूप से किसान को फ़ायदा भी होगा। जो पेस्टिसाइड इत्यादि के छिड़काव करने में मनुष्य के शरीर पर भी दुष्प्रभाव होता था और वेस्टेज भी होता था, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग यह निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी भारत सरकार ने प्रावधान किया है और सिर्फ एग्रीकल्चर इंफ्रा ही नहीं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया। कुल मिला के अगर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को हम देखें तो ध्यान में आएगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया गया है और इसमें इंफ्रा फंड में सभी राज्य शामिल हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोगों की कोशिश है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं प्रदान करें, जिसका फ़ायदा निश्चित रूप से किसान को और किसानी को मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र में हम सब की कोशिश है कि किसान की आमदनी बढ़े और इस दिशा में भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर निश्चित रूप से बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे किसान की आमदनी बढ़ेगी। मैं पिछले दिनों श्रीनगर में था। श्रीनगर में केसर की खेती होती है। मैं केसर के किसानों के साथ बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था, तो वहाँ पर भारत सरकार ने एक सैफरन पार्क बनाया है जिसमें केसर को प्रोसेस किया जा सकता है। तो उस किसान ने खड़े होकर हमको कहा कि पहले हम केसर की खेती करते थे तो केसर का मूल्य 1 लाख रुपया किलो हमको मिलता था। जब से सैफरन पार्क भारत सरकार ने बनाया है अब हमारी केसर का मूल्य 2 लाख रुपया किलो हो गया है। मतलब कहने का आशय ये है कि कुल मिला के किसान की आमदनी दोगुनी हो, इस दिशा में टेक्नोलॉजी का और भारत सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकार के क्रियान्वयन का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। जब कृषि के क्षेत्र में निश्चित रूप से 2-3 प्रकार की चुनौतियां हैं। एक तो किसान की लागत कम हो, इस पर काम करने की ज़रूरत है। किसान को अपने उत्पादन का वाजिब दाम मिले, इस बात की पर काम करने की आवश्यकता है। किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े, महंगी फसलों की ओर जाए, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। किसानी नए लोगों को भी आकर्षित करे, किसानी नए युवाओं को भी रोजगार से जोड़ने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बने, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं इसी दिशा में काम कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि एक कालखंड था जब हमारे को खाद्यान्न की बड़ी आवश्यकता थी और हमारे साथ उस समय काफ़ी अभाव था और इसलिए उत्पादन केंद्रित नीतियाँ बनी। हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग प्रारंभ किया और निश्चित रूप से उसके परिणाम स्वरूप हमारी आवश्यकता की भी पूर्ति हुई और आज हम कृषि के क्षेत्र में अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन साथ ही साथ हमको यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो भूमि है जिस पर हम खेती करते हैं उस भूमि की उर्वरा शक्ति यह भी दिनों दिन बढ़ती रहे। हम केमिकल फर्टिलाइज़र का अगर अधिक उपयोग करते हैं तो भूमि की उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। उसका नुकसान जब भूमि को होगा तो आने वाले कल में किसानों को भी होगा और प्रकृति के साथ जब भी तालमेल बिगड़ता है तो समस्या तो खड़ी होती है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। इसलिए भारत सरकार ने यह कोशिश की है कि केमिकल फर्टिलाइज़र सीमित मात्रा में डले, आवश्यकता के अनुसार डले। इसलिए सॉयल हेल्थ चेकअप इस अभियान को पूरे देश में चलाया। 22 करोड़ कार्ड किसानों को वितरित करने का काम किया।
साथ ही ऑर्गेनिक खेती पर भारत सरकार ने परंपरागत खेती योजना के माध्यम से किसानों को सहायता देकर इस पे भी हम लोगों ने बहुत तेज़ी के साथ काम किया है। और अब नेचुरल फार्मिंग पर भी भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का बल है। भारत सरकार उस पर योजना बना रही है और उस दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ कि भारत सरकार खेती के क्षेत्र में हमेशा प्राथमिकता से देखती है और प्राथमिकता से काम करती है। हमारी कोशिश है किसान समृद्ध होगा तो गांव समृद्ध होगा, और किसान और गांव दोनों समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लगातार सकारात्मक कोशिश की जा रही है और उसका सदपरिणाम भी हम सब लोगों के सामने आ रहा है। मैं समझता हूँ इस अवसर पर बहुत सारे उड़ीसा के किसान भी जुड़े होंगे। मैं उन सब को भी यह प्रार्थना करना चाहता हूँ, खेती के क्षेत्र में हम बढ़ चढ़ के काम करें, खेती के क्षेत्र में हम खूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, खेती के क्षेत्र में हम बागवानी की तरफ आएँ, मधुमक्खी पालन की तरफ आएँ, हर्बल खेती की तरफ आएँ। जो सरकार की योजनाएं उन सब का फ़ायदा लें, लेकिन साथ ही साथ हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए खेती करते समय भूमि का संरक्षण, प्रकृति के साथ तालमेल, इसके प्रति भी हमारी प्राथमिकता बनी रहे। ऐसी मैं इस अवसर पर आप सब से प्रार्थना करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र में जो मीडिया का महत्व है, वर्तमान परिवेश में देश की गति को दृष्टिगत रखते हुए OTV चैनल अपनी सकारात्मक भूमिका को निभाएगा, जिससे न सिर्फ उड़ीसा का ही फ़ायदा होगा अपितु पूरे देश भर का फ़ायदा होगा और सारे मीडिया को एक अलग प्रकार की दिशा मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि मैं पांडा परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उनके प्रति आदर भी करता हूं और उनका जो भावना है वो इस चैनल के माध्यम से सारे उड़ीसा में प्रभावित होगी और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम काम करने में सफल होंगे। पुनः आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत। Thank you so much, sir, for the priceless words of wisdom that only comes with decades of experience and expertise. Your good words will go a long way in motivating all of us to work harder and achieve bigger goals in life. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Honorable Chief Guest, Foresight 2022, Honorable Union Minister, Shri Tomarji. Thank you. I'll take this opportunity to thank our partners, our sponsors, without whose support the 12th edition of Foresight could not have been this special and successful. OTV Foresight 2022, presenting sponsor, Jupiter Public School, co-powered by Panasonic Air Conditioners, supported by IMFA, co-supported by S&M Group and MGM Minerals, associate sponsors, Paradeep Phosphates Limited and Jindal Steel and Power Limited. Can we have a round of applause for the sponsors, please? Thank you, everyone. OTV Foresight 2022 रे बे समय हमने समस्त आगो को बढ़िबा जीव जगत को बंची रखिबा पई हेले मृत्तिकार सुरक्षा केते गुरुत्वपूर्ण ए कथा हमने समस्ते कोठना कोठी हृदयंगम निश्चित भाव करती अनुभव भी करती उद्भिद बंचिबा और बढ़िबा पई माटीर आवश्यकता रही एवं जदि आम देखा इनफैक्ट सॉइल प्लेज ए वेरी इंपोर्टेंट रोल रेगुलेटिंग द क्लाइमेट ऑफ द रीजन जमती अम्लजान बिना उद्भिद एवं प्राणी जगत बंचिबा तिष्ठिबा बड़ कष्टकर मृत्तिका बिना उद्भिदर स्थिति को आम जदि कल्पना करवा सी भी बड़ कष्टकर एवं कहबार अर्थ होची जे मृत्तिकार सुरक्षा करवा आम समस्तंकर दायित्व एवं कोठी ना कोठी आजिर ए पीढ़ी धीरे धीरे कथा को हृदयंगम करवा आरंभ कर देइछंती। आज यही संपर्क में आम आलोचना करवा ईशा फाउंडेशन मुख्य सद्गुरु जगदेश जगी वासुदेव सहित ए बाबद ही वर्चुअल मोड रे डिस्कशन करिसेंती ओटीवी को फाउंडर एमडी
जगी मंगत पंडा वर्चुअल मोड्र से डिस्कशन से साक्षात्कार को तो आम निश्चित भाव देखा कि पूर्वर मु रिक्वेस्ट करी आम टेक्निकल टीम को इफ दे कैन प्ले एन एवी व्हिच इज देयर जोटा कि उद्भिद बा मृत्तिका संरक्षण एवं तार उपादेयता संपर्क में किसी आम मान जनइब से एभिटी को प्ले करने मुझे कहि परवर्ती समय आम साक्षात्कार को निश्चित देखा। We are talking about climate change, carbon emissions, and global warming and various other aspects. But we are not addressing soil. Soil is the habitat upon which zillions of lives thrive. Once there is no richness in soil, then you have forsaken the planet in many ways. Every responsible scientist in the world and the UN agencies are clearly saying we have only 80 to 100 harvests left. That means approximately 45 to 50 years of agricultural soil left on the planet. By 2045, we will be producing 40% less food than what we are producing right now, and our populations will be 9.3 billion people. The food shortages that could manifest in the next 25 years, the consequences of that is unimaginable. Civil wars will unfold across the world once there is food shortage. What we are facing now is soil extinction. Why is soil becoming extinct? Where is it going away? What is happening to our soil? We must understand, if you add organic content to sand, sand will turn into soil. If you remove all organic content from the soil, soil will become sand. In normal agricultural soil, the minimum organic content should be between 3 to 6%. The most minimum is 3%. At least this minimum to keep the soil alive, to keep the soil as living soil is a must. Agricultural soils across the world, the depletion is so heavy. In most countries, more than 50% of the topsoil is already gone in the last 100 years. The nutrient levels have dropped significantly. The level of micronutrients you would get from your food in early 20th century to what you are getting from the same food now has dropped 90%. If you ate one orange in 1920s, what you got from it, now in 2020, if you have to get the same, you will have to eat 8 oranges. This is what we have done to our food. सद्गुरु नाम ही परिचय आध्यात्मवाद माध्यमरे मानव जीवन को दिग्दर्शन देबारे केवल भारत कहीं सारा विश्व रे एक परिचित नाम। जड़े सत्यनिष्ठ योगी, दार्शनिक, आध्यात्मवादी कवि, जीवनधर्मी लेखक, मार्गदर्शी वक्ता भावे विश्ववासी निकटरे से बेश जनाशुना। खाली आध्यात्मवाद नुहे, व्यावसायिक क्षेत्र आरंभ करी स्थापत्य कला, चित्रकला, क्रीड़ा, विमान उड़ाण, मोटर स्पोर्ट्स जाए सबुथिरे सिद्धहस्त सद्गुरु। विशेषकरी परिवेश संतुलन और मूर्तिका संरक्षण उपरे तांको निरंतर उद्यम जोड़ी देछि एही महान व्यक्तित्वों को महानतारे आउ एक फर्द। 3 दशंधि तले तांको द्वारा प्रतिष्ठित अनुष्ठान ईशा फाउंडेशन एबे समग्र विश्व रे 300 रु ऊर्ध्व केन्द्र माध्यमरे मानव सेवा जारी रखिछि। एही अनुष्ठान रे 11 नियुतरु ऊर्ध्व स्वेच्छासेवी निरंतर सेवारत। देशर 50 जन प्रभावशाली व्यक्तित्वों मध्यरे अन्यतम सद्गुरु को इतिमध्यरे मिली सारिछि भारतर सम्मानजनक पद्म विभूषण उपाधि। Thank you very much for the beautiful audiovisual. When broadcasting and media magnet from the east speaks to the saint from far south who has
the simplest answers to all your difficult questions. That is a conversation you would not want to miss, because that's going to be absolutely insightful and interesting. Ladies and gentlemen, please put your hands together for this very special session where Srimati Jagi Mangat Panda will be speaking to Padma Vibhushan Sadhguruji. We recorded it some time before. Trust me, this is going to be quite enlightening. Let's have the session. Namaskaram. Namaskaram, Sadhguru. Namaskaram. How are you? I'm very well. So many years since I saw you. I know. And it's amazing that now we are seeing each other like this virtually. Although it would have been wonderful. I just bumped into Jay 4 days ago. He did mention that. He did mention that to me. And he said that you even remembered that you were having this conversation with me soon. So I said, that's wonderful. I've always been feeling, not so good about… We cancelled or postponed some conversations with you 2-3 times. I'm very sorry, I usually… No, I can understand you're busy doing so many things, so many new initiatives, and you're constantly on the move. And this new initiative, of course, is mind-boggling to me, of course. I'm so happy that you gave us time to talk to us today. Although we would have been ecstatic if you had been here physically, but I understand that you're occupied with your new initiative, Save Soil. Having said… I'm planning to come to Odisha and do the Bali Yatra physically. Oh, that'll be wonderful. Not just the paper boat, real boat. I want to do that Yatra, I'm thinking about that'll be fantastic. That'll be fantastic. Do let us know if there's anything we can do to help you succeed in that process. Because I think, again, that'll be one other very innovative initiative of yours. So… Well, having said that, you have been busy with your new initiative and hence you couldn't come to Bhubaneswar. Let me start with my first question to you, which is on the subject of Save Soil. So from saving rivers, water, planting trees, and now this new initiative of Save Soil, your focus has always been to increase the consciousness among people across the globe about the environment we live in. And this time, of course, you plan to do something that is quite unthinkable for people like us. Just the scale of the initiative is so large. Traveling 30,000 kilometers alone from London to India, covering almost 26 countries in 4 months is a tall order, I must say, on a motorcycle. And so I understand that it is important that such an important initiative like Save Soil requires a big effort and to get the desired traction. But my question is not why, but how. So my question is, what made you choose this path? Or should I say that what made you choose this back-breaking journey? Well, I hope it doesn't break my back. And about this new initiative, it's not a new initiative because see, people are thinking water, air, soil are different things. Right. That's not how nature works. It is one cycle of things. It is probably in 95 or 96, when some UN agencies came and predicted in Tamil Nadu that, by 2025, 60% of Tamil Nadu could become desert. Right. I didn't like predictions, so I drove myself to see if this is for real. Then I saw it may not go till 2025, it may happen sooner, because 3 perennial rivers had gone totally dry, and bore wells where we were striking water in 150 to 200 feet beneath the ground were going to 1100, 1200 feet beneath the ground, and palm trees were dropping their crowns. So I saw this is definitely coming, and that's when we started what is called as Project Green Hands, out of which millions of trees have been planted by our volunteers, living trees, because these are not on government lands, these are on farmlands where farmers are taking care of it, and it is an economic process for the farmer. Plus many other organizations and the state government also has planted many more million trees. So as a whole movement, we have increased the green cover significantly in Tamil Nadu,
but according to Google Maps, Google Images, it shows somewhere around 10 to 11% increase in green cover has happened since that day. Wow. So, even then it was about soil, but we spoke about trees, we spoke about farming, and well, we talked about rally for rivers because we must understand in a tropical country, only in our country, in India, only 4% of river water is from melting ice. 96% is just monsoon rain. When monsoon rain comes, whatever… normally these days monsoon rains are happening anywhere between 70 to 110 days of rainfall in a year. This must flow for 365 days. If it has to flow for 365 days, soil must have a certain amount of organic content. Only then it can retain the water and let it go slowly. Otherwise, everything will flow on the surface. This is what is beginning to happen right now. People are always wondering, last time even when the Kerala flood happened, people said, Sadhguru, how is this possible? 2 months ago, there was such a flood, it looked like a deluge, but suddenly there is a drought. I said, these two things are naturally connected. Right. See, when the water comes down in the form of rain, it must percolate down into the ground. Right. If it is running on the surface, you call it a flood. If it runs off on the surface, within 2 to 3 months, drought is inevitable. Right. It is bound to come because one thing is it's taken off the topsoil, another thing is it's not sunk in where it should be. If we handle the soil properly, we can store 8 times more, that is 800% more water than all the rivers on the planet put together in the soil. That is the capacity of the soil. If you go into a rainforest where organic content may be 60–70%, if you just… any season in the year, like any month of the year, if you just dig with your fingers, not with any implement, just 2–3 inches if you do like this, it'll be damp. So if you do this to your agricultural land, I'm saying if you increase your organic content to 8 to 10%, then your irrigation requirements in the country and in the world will come down by 70%. Only 30% water you can manage the same level of crops. If you increase your organic content to 12 to 15%, you can bring down the irrigation requirement to 10 to 15% of what we are using right now. So, soil, water, air, these are not different things. One thing that most people probably living in urban centers, they don't look at it this way is, see, right now a tree is growing. It is not growing only because of the nutrients from the soil. Most of its growth is because of the carbon capture that it is doing from the atmosphere and the humidity that it's taking from the atmosphere. But it has to make that carbon and put it down into the earth for it to exchange nutrients with the microbial life there. So these are not different things, these are not different initiatives, it's the same initiative, we're just enhancing the scale. What was a local program at one time, we made it national with Rally for Rivers, now we are in Kaveri calling, transforming a whole river basin which is about 83,000 square kilometers. Based on the success of this Kaveri calling, we have formed a very good partnership or alliance with UN agencies, 2–3 UN important agencies, which is why now we thought we will go global, because when it comes to ecology, national boundaries mean nothing. The life, the microbial life and the biodiversity is not respecting your national boundaries. Earth is earth, soil is soil, it is all connected, so we cannot address ecological situations in terms of nationality or anything that way. Geography is not… only in our minds it's broken, in reality it is not broken. Yeah. About my back breaking, well, this is also a test for the yogic sciences whether yoga works or not. Well, sure I'm it will. 65 years of age, I shouldn't be doing anything like this. I could live comfortably by myself, but No, but- I'm doing this because as a generation, Right. we are in a cusp of time. Right. Right now, if we act, in the next 10 to 15 or 20 years' time, Right. we can make a significant turnaround. Still, we are in that place. But let us say we let it pass for another 30 to 40 years. After 40 years, if you try to turn it back, the loss of biodiversity, the way it is happening, most of the FAO scientists are saying on an average,
27,000 species are going extinct per year. Wow. At this rate, in 40 years' time, we would have reached a place where if we want to turn around the soil, it will take 150 to 200 years, which will be a disaster for human civilizations on the planet. So, as a generation, we have a responsibility, we need a commitment, and above all, I also see it as a privilege that we as a generation are in a cusp of time, that if we have the necessary commitment and courage to make this happen, we can turn this around. It's not some rocket science, it can be done. But if we allow this to go to the next generation, they will not be able to turn it around because it would have reached that point where turning it around is very difficult. So I'm just trying to do my bit before I'm no good for anything. No, you'll always be good for something. So, no, wow, those are really alarming facts. I'm sure this information that you shared with us, many of us are not even aware of this. But I must say that we are very fortunate that we have someone like you who's leading this initiative, someone with your stature. Because the enormity of this task that you're about to partake in is an amazing first start. I think it's a great beginning to this great initiative. But my question is, what next? Because people have short memories. Once you move on, they will move on too. Since we are all creatures of habit, we will be back to our mindless living unless this new order becomes a habit too. I'm sure you'll agree with that. See, what the movement is trying to achieve is just this. The movement is trying to bring a policy change in 192 democratically elected governments in the world. Right. Why this policy change? People keep asking me, Sadhguru, what can I do? Can I fix my garden? Can I go plant a tree? I said, don't do anything. When you are a citizen in a democratic nation, there are two things which are very powerful: your vote and your voice. Your vote, I do not know whether you cast it or not, but your voice is important. Today, everybody has a voice because of technology, because of social media platforms. I'm saying use your voice. What we want people to do is, from 21st of March, for 100 days, everybody speak about soil. At least spend 5–10 minutes a day to speak about soil, enhance the message, and we have a way of aggregating all these voices, and if it is over 3 to 3.5 billion people, that means 60% of the electorate has spoken. We are already in the process of writing to all the heads of state. We are sending a soil policy document, 100 ways or hundreds of ways as to how to regenerate soil in different regions, different soil types, different latitudinal positions, different economic conditions and different farming traditions. In all this, how to do, for each country we are writing a recommendation policy, which we are handing it over to all the heads of state through the United Nations. And apart from that, we are also writing to 730 political parties on the planet. We are urging them to make soil and ecology part of their election manifestos, part of their manifestos to whatever they wish to do, because it doesn't get in there, then it's not going to happen. For this to happen, see, after all, political parties and governments are trying to fulfill people's mandate. Right. So people have to speak. Till now, people have never spoken. So people have to speak. If 3 to 3.5 billion raise their voice and say, save soil at least once, this means political parties and governments cannot ignore that. They will not ignore the voice of 60% of the electorate. Nobody will do that. So that's what we're trying to achieve. So what is next? Will we just leave it at this? No. We are signing MOUs with various nations. Even before I start the rally, I'm signing MOUs with about 9 nations in the Caribbean islands and those regions. And similar things will be done with many small nations. The big nations will know what to do, many of them are already beginning to do, plus we will urge them to do further. So I'm spending probably a month in South America meeting all the heads of state, another month in Africa meeting a whole lot of people, and another month in Australia and Asia, because we want to handhold small countries, and we are also establishing a group of 25-member scientific committee of, of people who are knowledgeable about this, who can handhold small nations to go through the transformation.
If by then if UN agencies and governments and other financing bodies, if they handhold the small nations, very easily it will happen. We will see, but the most important thing is, it must go into the policy. Why it must go into the policy is, see today you have, let us say, 100 acres of land, you are keeping it really well. What the next generation will do, you do not know, unless it goes into the policy. Only if it's in the policy, it will be maintained for generations to come, and that is what we are trying to achieve. Once we get into the policy, depending upon the direness of the situation, how how bad the situation is, accordingly different nations will act at different speed. But no nation will go without acting once it is in this policy. Speed may vary from nation to nation depending upon various realities of that particular nation. Right. I think you've done a lot of groundwork, I see, and that's excellent. May I just shift the focus to the topic for Foresight today? As you know, today's Foresight topic is the New World Order, winners and the disadvantaged. So just a little bit from the COVID experience, the consequences that were derived from COVID-19, as you're aware, are not just the virus itself, but it is the grief of waking up and to realize that the lifestyle that we have been evolved living in is unable to cope with the pandemic. And that what is happening now was predictable. In fact, a lot of experts had predicted in the past. So I think fortunately many people today have realized that if we do not make a conscious choice to change our course of action, whether individually or collectively, we will get more of the same. So I think my question here is, then does COVID then give us an opportunity, the COVID experience, to build that conscious planet that we want to do and build it now, since this momentum will not last too long? Every situation is an opportunity to change if you are conscious. Every situation that you face, pleasant or unpleasant, you can use that. Unfortunately, people have lost lives, nearly 6 million plus lives have been lost on the planet because of this COVID. That is an unfortunate situation. I don't know anybody around me who has not lost somebody that they knew, a friend or family, almost everybody has lost someone. But those of us who are alive, who lived through this, we are crying about our lifestyle. Right. We should stop crying about lifestyle, all that will happen. Well, anyway, once again, India's economy is surging and because of, whatever, because people strive harder when things go bad, so I think that striving is paying off. And I think the administrations are also doing the right things, so it is all paying off. And as a nation with 1.3 billion people, I think we have come out of it spectacularly well compared to many much more developed, economically much more capable nations. Compared to them, we have come out very well. And the way we have produced vaccines and the way we've administered that to an entire population is commendable, yes. For the rest of the world, it's quite a miracle, the way we've done it, because you don't see that kind of medical infrastructure on the ground, but somehow people have done it. Everybody has stood up and made it happen, from the lowest level of worker, from the… in the medical teams and the administrative teams, from the lowest cadre to the highest, I think everybody has stood up and done what they have done. I think we need to hugely appreciate that, because, we were active in the villages. What I saw was, from a police constable to a village accountant to everybody, suddenly they were transformed human beings. They were all functioning with such sense of service which we have never seen before in them. So that was really great to see that when really difficulties came, their humanity became the most important quality in them, not the other aspects of their life. Right. So that's great, but at the same time, one thing that COVID has done is, it has hung mortality in our face. Yes. Mortality is always hanging in front of us, but most people think they're immortal. Yes. Unfortunately. But COVID has made mortality very obvious because people around us started dying, and
when mortality comes into your awareness, when you understand you're mortal, that means the way you know yourself right now could end right now or tomorrow morning or whatever. When you realize that, that is when you will really start seeking what is beyond this. What is beyond this physical body? What is beyond this social engagement that I have? When that question comes, that is when you turn spiritual. Spiritual process is always relevant only because somebody realizes that they're mortal. See, suppose you and me were not mortal, we are here forever. Yes. What would spirituality mean to us? Nothing. So, mortality is an important thing. That is the fundamental fact of our life. When an individual human being realizes that, definitely there will be evolution of seeking within oneself. I think in many ways that has happened. We did our best in those times to reach out to the world and offer these possibilities, and millions of people have taken to this. Just to give you some sense of the seeking that has happened in the world. In the year 2020, our video views, just one organization, our video views, just me, one person, all right? Our video views have been 2.48 billion. Wow. B, Wow. not M. Yes, that's a huge number. This is because there is a longing, there is a seeking. Suddenly people realize the simple things, petty things they were fighting for suddenly is meaningless. They have to look for something more profound, which is a good thing, but it need not come this way. Disasters need not strike for us to come to our senses. I hope people come to senses without inviting disasters. No, well, it's happened, so we must make the best of it, I suppose. We must find that silver lining, and I think your initiative… What life throws at us… Yes, and… is not always our choice, but what we make out of it is always our choice. We must make 100% choice about that. So I think your new initiative comes at the right time then, because, you know, we are still kind of… No, you should not say new initiative, same initiative. The same initiative, but the large initiative. We're just changing gears, that's all. That's the wonderful initiative, I should say. You know, I come from a business background, so I'm constantly actually, whenever I see an initiative, especially like this one, I'm constantly thinking as to how we as a business community can contribute to this cause, of course, other than the usual CSRs and all that. And you know, the whole idea of investing in something like this, it's a long-term investment. And you know, since long-term investments are needed to make any change to the key areas of soil health, is it possible for us to make a compelling business case for investing in soil health, which may secure a broader engagement of the business community to take action on this issue on a very large scale? Because that's probably what is required, considering all the facts and the numbers that I saw. They're absolutely mind-boggling. Well, yes, very much possible. I could articulate this for hours for you, but right now I would request all businesses to focus on this one to enhance the message. You don't have to support me. Right. All you have to do is from March 21st, in a concerted way, all of us speak about soil. Just make the message as big as possible, only then you will have the needed policies. When the policies are there, then business communities can see how to participate. We have a whole plan as to how individual businesses can participate, or as groups of confederations or other things can participate. But individual businesses can make a business case out of this. I'm saying it can be very, very profitable for industry and business to get into this. There are many ways. I don't want to say this in without the necessary detail, because it may not make sense to people, but there are many, many ways in which one can make a very good business case, a long-term business well-being, a long-term investment, and extraordinarily good returns, and above all, ecologically enriching. Right. So, wow, I mean, it was really wonderful just talking about this. Like you said, we can keep talking about this issue because it is a very vital and large issue. But I must invite you once again to Odisha. As you know, we also have rivers here that are drying up.
and perhaps maybe a little bit focus on Odisha will help. But just before I end, I want to thank you one more time for taking the time to talk to us. And I'm sure that just hearing you, just listening to what you said, I get a sense that this initiative will be very, very successful because of the kind of efforts that you're putting in. I do wish you all the best, and I hope that all the people who are listening to you will feel the same way and take action on this. Thank you very much, and I definitely been planning to come to Odisha when I'm a little more free. Apart from doing work, I just want to come to Odisha because of Konark and Bhubaneswar. You must. I'm very interested. As I said, I'm also talking to somebody about the Bali Yatra. If that takes shape, that will absolutely we will do that. Be fantastic. And about reaching out to the people, about the Oriya people participating in this. As I'm riding these 100 days, I'm available. Even when I'm riding, I can broadcast a video and audio. So every day if you publish some 2 minutes, 3 minutes of this for the people in Odisha, we'd love to. I think we can activate the whole state. Definitely, it will be my pleasure to be participating in this. I will learn a few words from Oriya language. We would really like that too, yes. I think… You must translate me, that's the only problem. Of course, no, we will do that. We will definitely do that. But thank you very much, ma'am. Thank you, Jai Jagannath. Jai Jagannath. Namaskar. Namaskaram. Thank you very much, Sadhguru, for sharing with us your thoughtful insights. I think Save the Soil shouldn't just be Sadhguru's mission, it should be everyone's mission. And in 21st century, being grounded shouldn't only mean being humble, it should also mean respecting the soil, the ground you stand on, and you are dependent for your very own existence. Thank you very much, and thank you, Srimati Jagi Mangat Pandaji, for those thoughtful questions and for bringing to us such a special session that we will remember for years. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Padma Vibhushan, Sadhguru and Srimati Jagi Mangat Panda. What a brilliant session that was. I'll once again take this opportunity to thank our sponsors. Ladies and gentlemen, OTV Foresight 2022, presenting sponsor, Jupiter Public School, co-powered by Panasonic Air Conditioners, supported by IMFA, co-supported by S&M Group and MGM Minerals, and associate sponsors, Paradeep Phosphates Limited and Jindal Steel and Power Limited. Please give a generous applause to all our partners and sponsors. Thank you very much. Those are really beautiful and inspiring words from Sadhguru. All right, it's time to move forward. OTV Foresight 2022, changing times, changing minds. ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ JSS, country head market function and product group head at TCS Iron. I would request him to join us, but before that, we have AV. I will request our technical team if they can play that AV. Then Mr. Gopal Krishna JSS will join us on the stage. Can we have the AV, please? Gopal Krishna GSS, Tata Consultancy Services বা TCS ର country head, market function এবং product group head TCS Iron. বাণিজ্য ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক চর্চিত ও বেশ জনাশুনা নাম। ব্যবসায় ও বাণিজ্য পরিচালনা ক্ষেত্রে তাঙ্কর রহিছি এক লম্বা অভিজ্ঞতা। 27 বর্ষর কার্যকাল ভিতরে বিজনেস, সেলস এবং মার্কেটিং, প্রডক্ট ম্যানেজমেন্ট, কনসলটান্সি, শিক্ষা, ব্যবসায় ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য করে নিজের দক্ষতা প্রদর্শন করিবারে সফল হইছন্তি গোপাল কৃষ্ণ। টাটা কনসলটান্সি সার্ভিসেস পূর্বরু সে উইলিয়ামসন এন্ড মাগুর গ্রুপ, ক্যারিয়ার কর্পোরেশন এবং ভোল্টাস লিমিটেড রে কার্য করছন্তি। ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কিত অনেক উচ্চ কোটির লেখা তাঙ্কু ভিন্ন এক পরিচয় মধ্য দেইছি। বিড়লা ইনস্টিচ্ୟୁଟ অফ টেকনোলোজি এন্ড সায়েন্স বা বিটস পিলানিরু से एमटेक डिग्री हासिल करछन्ती। तेबे ओडिशा सहित रहिछि तांकर एक मधुर और सुदृढ़ संपर्क। भुवनेश्वर स्थित जावियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रु से एमबीए डिग्री हासिल करछन्ती। तांकर निष्ठा और अभिज्ञता एवं दक्षता पई
ସେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। Namaskar. Thanks for the lovely AV which I saw. It's very surprising to see these photographs from where you people have got it. But it's really gives me a great honor to come to this Bhubaneswar once again, so which I spent a couple of years, say 22 years back. And I must thank Ms. Jaggi Panda and OTV for giving me this opportunity to speak on this Foresight annual convention, which is organized, where wisdom and experience meet. Distinguished speakers and respected guests, it is indeed a great privilege and honor for me to keynote speaker amongst the August gathering. At the outset, I wish to extend my gratitude to our health workers, central and state governments, media and civil society for their humongous contribution in containing the havoc that COVID-19 pandemic brought in its wake. Precious lives were sadly lost, livelihoods were largely impaired, thus alerting us to value health, environment, near and dear ones, which we so often take it for granted. The pandemic also brought forth to us, the world citizens, some stark realities and pleasant discoveries. We now know the limitation of mindless expansion and exploitation of nature, as well as the power of technology and the value of being with our loved ones. In effect, the pandemic has left us with a completely different world, with tightened global financial market conditions, behavioral changes, and altered consumption patterns. This pandemic did not just stress our system globally, but also exposed the existing gaps to our systems, forcing all of us to identify the loopholes, thereby regroup, reform, and reinvent ourselves. As an outcome of this pandemic, India has emerged as a world leader in the new world order. By the end of financial year, India officially will become the world's fifth largest economy, overtaking Britain. Germany at fourth position, Japan at third position are within the striking distances. According to several global financial institutions, India's GDP will be the world's third largest by the end of this decade. London-based IHS Markit, a global leader in analytics, projected India's GDP at $8.4 trillion by 2030. India will play a pivotal role in the world affairs. In fact, I must summarize by my opinion about future India in the form of a famous ad jingle. बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ना सिर्फ टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला, बजाज, it's also you and me. Our Honorable Prime Minister has also urged Indians to help make the country a global leader in the post-pandemic world. During one of his speeches in Parliament, he said, quote, "We are living in a new world order. There has been a new turning point after pandemic. We are being recognized as leaders. India must take on the global leadership role and underestimate itself in playing the leadership role," unquote. India has already proved its mettle in several critical sectors in the world economy.
All of us, we know that IT and IT-enabled services has been the strong drivers of the Indian service sectors. Our reputation as the pharmacy of the world and the source of low-cost generics and drugs is not unknown. Agri-based food processing, textiles, automobiles, electronics are some of the fastest growing industries in our economy. Name any sector of the economy, it's on a high growth path. In fact, last evening, I was going through some article where they say in last 5 to 6 months in India, bicycle sales has been doubled. So it shows that, how conscious we become about our health, global issues, and which also is giving a boost to the economy in the other sectors. With the theme and thought leadership that this distinguished forum presents, we should take this opportunity to take a step back and ponder on the strengths that gave us the laurels in the new world order and the areas which we need to focus in order to take us in the winning league. Now, who are the winners in the new world order? Where smart innovation in every sphere of life take us a pleasant surprise, in my humble opinion, they are the ones who have humility to unlearn the old and courage to learn the new, irrespective of age or hierarchy. Winners are also the ones who have invested in upskilling and meticulous research and innovation instead of rote learning and mindless job schedules. I take pride in sharing with you that TCS ION, the organization, the unit which I belong from, which has created multiple innovations in bringing digitization of assessments, evaluations, business processes, and learning in the country. India has the potential to emerge as the preferred destination for higher learning and skill building. With the internet penetration rate estimated to reach above 55% by the end of 2025 in India, digitization of education remains one of the topmost priorities. Many e-learning portals have appeared and are performing well as an increasing number of learners enrolls themselves for online courses. I can think about a recent example which I can give, that University Grant Commission has already approved and allowed higher educational institution to start the online courses, the degree and diploma courses, which again gives a very big boost on the learning aspect, certification aspect, and education aspect, and the literacy aspect in this country. Now, we come to the disadvantage of the New World Order. Unfortunately, with a history of wars and conflicts, exploitation and other natural factors, we do have disparity in terms of access to education, healthcare, and economic opportunities for the disadvantaged. And if the disadvantaged are not empowered and included, the winners shall not be truly winners. But I do insist that digital technology presents thoughtful and powerful solution to overcome these disparities, which was not possible in the old world. But notwithstanding that, we must develop a sense of empathy for fellow human beings, for all of us to emerge as a winner. We must not forget that during the peak wave of COVID-19, when most of us were feeling helpless, we saw selfless volunteers who arranged for life-saving equipment, hospital beds, etc., using simple messaging and communication apps like WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, so on and so forth. It goes to show how empathy can empower all of us to achieve exponential outcome using technology. Sustainability is also a part of empathy. If we are not to be truly empathetic to our future generation, we will be conscious in our consumption
and exploitation of environment and natural resources. I'm proud of the fact that Tata Group has these values enshrined in our code of conduct. Yesterday, 3rd March, we celebrated the visionary founder of Tata Group, Shri Jamshedji Nasarwanji Tata's 183rd birthday. We at TCS ION also did a bit in providing TCS ION digital classroom free to all, the solution free to continue routine classes in primary, secondary, and higher education institution in the country while they can learn in home during this pandemic period. We converted our delivery centers across the COVID care centers with full medical support. Many of my colleagues turned into a full-time volunteers, even as ambulance drivers in some cases, because all of us, we knew that ambulance drivers were shortage in the second wave of COVID. Apart from empathy, I would also wish to bring about overcoming our cognitive bias, like over-dependence on information available in social media. A cognitive bias is a subconscious error in thinking that leads you to misinterpret information from the world around us and affects the rationality and accuracy of decisions and judgments. You must be thinking why I'm talking about the cognitive bias. The reason I'm talking about these biases, and there are many of them, is because often we overlook facts, research, data, and merely go by conviction. All of us, we heard that information is power. And now information is available, the same information is available to everyone in one click of a button. But now, in new norm, effective use of information is actually a power. India is at the cusp of digital revolution in the education sector, and it is paramount that as government, as businesses, and as individuals, we take rational decisions. If we must be leaders in the new world order, then success will come through investment in high-end research, digitization, attention to data, and insights, well-laid out plans, policies, and adherence to these policies. Standing in the land of exquisite art and culture, that is Odisha, I do ponder often on the role of art and culture in the new world order. Art and culture has been proven to be soft power of our nation across the world. It is this soft power that world recognizes time and again and make us a heritage-rich nation. As I come to my end of my address, I reflect upon the words of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, where he once said of making India as a Vishwa Guru. I do dream of coming times when our future generations shall hail our country as the Vishwa Guru in the new world order. Thank you and namaskar. Ladies and gentlemen, can we please have a huge round of applause for Shri Gopal Krishna GSS? That was absolutely insightful. Thank you very much, sir. So you spoke about some biases that one should be wary of when designing a product or strategy for government bodies or edtech companies. Why do you think those biases play such a critical role? This one? Yeah. So when we started understanding that how the technology can give a effective in the education sector in the country, almost a decade back, we have seen the various things which were happening. A, resistance from legacy to adoption of technology. B, the apprehension of the effectiveness of the technology. And these were happened basically when people have a notion about that, cloud may be the safe
a place for keeping the data. That is how these things which has happened, and that is how we understood that, these biases definitely is there because of the half or not correct informations which people have. Second thing in this aspect is where when this took a growth path, when the adoption of technology took a growth path in the country, at that time, lot of other technology players which has come and not doing a proper analysis and the data and the research, and they started using the technology in this space. Then eventually what has happened is, in between, people have started having a different biases that how it is safe to use a technology here, whether my data is safe, my entire activities which I am doing day in, day out is going as per the required to the institutions. So there are players who are like serving half-cooked meals, and that is adding to the biases as well. I'll not say half truth, but definitely, yeah, I think they have to do more research, understanding more, and because future is technology, all of us, we are aware, and undoubtedly that technology is going to play a big role. And then as business leaders, it's our responsibility to encourage and educate and give a right information at right time, so that people will not be afraid of using technology. So well said. Well, TCS Ion is a provider of digital learning. What do you think the impact of pandemic is on the entire education sector? Yeah, so pandemic, pre-pandemic, a lot of apprehension was there using online learning, the adoption, the acceptance. The civil society used to say brick and mortar model. If I go to some institution, that is a better way of learning. But the pandemic actually last 24 months has given this boost to this entire idea. As far as in terms of business, definitely it has got affected, but in a positive way. And adoption has gone multifold. Acceptance has gone multifold. Initially, some hitches were there to understand. Confusions were there in the system. But eventually, people have understood. In fact, what we have done is, Odisha is one such state where I have given the teaching learning aid, that is the digital classroom, which is developed by TCS Ion, to all 341 primary schools, which we are given a free to use. Congratulations for that. Well, the last question is definitely not from my side. It's from the side of parents, and they want to know if this digital platform is going to be the new normal, and will it take over and replace the physical classes someday? So, I don't think so we should worry about that. See, mobile phones are there, which I talked about the penetration rate. Is it really has actually stopped the interacting, talking face-to-face? Definitely not. It is actually a convenience, a way of getting in touch, getting information within seconds. Same, social media has not stopped us to meet. Otherwise, we wouldn't have this physical gathering. I would have sitting in Mumbai, and I would have actually spoke to you, right, using this digital platform. So this only will enable, these digital platforms, digital learning tools will enable teachers and learners both in effective ways. The analytics which are going to give actually that, in a classroom of 100 students are there, now teacher will exactly know which student, how he or she is performing, in which area they require improvement, which area they are doing extremely good, which is the area, if they put a focus, they can actually go with innovative ideas and ways and means. Even for students, it will help them to get in touch with the mentors, teachers, their peers, 24/7, and they can clarify doubts. And those analytics also will be visible to students. It is the only way that, how we are going to analyze, look. But machine has a power, the data has a power to reflect back the facts and figures of the students and learners.
So I think the only caution is to be informed in the right way and take a progressive perspective. Absolutely. Thank you very much. Congratulations, TCS ION, for all the success so far, and good luck for all your future ventures. May I request Srimati Jagimangat Panda to please join us on stage and present a small token Thank of you. gratitude to Gopal sir. An absolute moment of pride and glory as we have Sri Gopal Krishna GSS with us. His inaugural keynote address will go a long way in reminding the students and the parents that digital definitely is the new way and the safe way. Thank you so much, sir. Thank you. That was truly enlightening. Can we have another round of applause for this wonderful session? Ladies and gentlemen, I'm sure all of you will agree that all these 3 years of pandemic, we were all glued to different sizes of screens, whether it's a television or laptop or tablet or mobile phone. We were completely dependent for news, for entertainment, for education, and that has brought about an absolute paradigm shift in the industry. And we have one industry expert who will talk about the today and future of this industry. So joining us in this session, this is a business session, Harit Nagpal. Mr. Harit Nagpal is the Managing Director and Chief Executive Officer, Tata Play. He will be joining us virtually. The topic, Alochera Bisoy Jahame Kohiba, differentiating in a commoditized market. So, किभଳି भाବରେ परिवर्तन आसीछि एवं परिवर्तन को केमिति विभिन्न संस्था अडॉप्ट करिसंती तांकर निजस्व जहा अनुभूति रहिछि एवं किछि टिप्स बिजनेस रो किछि नुवा फंडा से हम सहित शेयर करिवे. He will be joining us virtually. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Managing Director and Chief Executive Officer, Tata Play, Shri Harit Nagpal. We welcome you, sir, to Foresight 2022, and may I request you, sir, to please address the gathering. It is an absolute honor to have an expert with decades of experience, and he will be speaking about the today and tomorrow of this industry, which has definitely become a basic necessity for everyone. May I request you, sir, to please address the gathering. Harit, sir, are we audible to you? Odisha welcomes you to Foresight 2022. Maybe there are some audio issues. Can we communicate to him personally that he's on live already? And there always is a good and bad side to technology, but we definitely are happy that being so far away, he could be a part of Foresight 2022. Harit sir, good afternoon. This is Shilagna from Foresight 2022. Welcome to Odisha, welcome to Foresight. And may I request you, sir, to please address the gathering. वहाँ पर आना चाहता था बट मैं आ नहीं पाया किसी कारण, तो ऑनलाइन आपसे मुलाकात हो रही है. So first of all, congratulations. It's a nice gathering. I can see you, you can see me, but we are not in the same room. I will spend the next 10 or 12 minutes maybe talking about what we do as a company, how we've brought what was Tata Sky and now Tata Play to where it is, the thought behind it.
and I'll be open to any questions that you may have. So when we started off about a little over a decade ago, तो हमने एक चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ कर ली थी कि हम एक कमोडिटी बिजनेस में हैं। कमोडिटी जैसे कोयला होता है, स्टील होता है, जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती, एक का कोयला दूसरे के कोयले के बराबर होता है। तो फिर ऐसी मार्केट में, क्योंकि हमारे पास कंटेंट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी, जो मेरे पास कंटेंट था वही कंटेंट सबके पास था, जिससे हम बॉक्स अपने बनवाया करते थे वही लोग दूसरे का बॉक्स भी बनाते थे। हम उसी सैटेलाइट से ट्रांसमिट करते थे जिस सैटेलाइट से दूसरे लोग ट्रांसमिट करते थे। डिस्ट्रीब्यूटर भी सेम थे, जिस प्राइस पे हम बेचते थे उसी प्राइस पे सब बेचते थे। किसी ने अगर 10 रुपये दाम गिरा दिया तो बाकी लोगों को भी 10 रुपये दाम गिराना पड़ता था। तो वी वर लाइक कोयले की जैसे मार्केट होती है वैसे ही हम लोग थे। तो ऐसी मार्केट में एक आदमी कैसे अपने आप को अलग दिखा सकता है, तो उसके बारे में हमने सोचा और वी सेड कि डिफरेंशिएशन ऐसे तरीके से हमको करनी चाहिए जो कि जल्दी कॉपी ना हो पाए। कि अगर आप प्राइस के बेसिस पे अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को, तो आपका कॉम्पिटिटर आधे घंटे में उसको मैच कर लेता है। तो डिफरेंशिएशन की जो कारण है, जो तरीका है, वो कल्चर में होना चाहिए, जो कि जल्दी कॉपी नहीं हो सकता, बल्कि ना कि किसी और चीज़ में जो कि कॉपी हो सकती है। तो काफ़ी सोचा एंड वी सेड कि भाई बेसिक कंटेंट, डिलीवरी ऑफ कंटेंट इन हाई क्वालिटी तो सभी देते हैं और वो तो बेसिक है। कस्टमर अगर आप जब तक वो नहीं देते हैं तब तक कस्टमर आपको चूज नहीं करेगा। गुड वैल्यू देना वो भी बेसिक है, जब तक आप वो नहीं देते हैं तो आपको कस्टमर चूज नहीं करेगा। तो ये तो बेसिक्स हैं, ये हाइजीन है, इसके बिना तो आप बिजनेस में हो ही नहीं सकते। डिफरेंशिएट करने के लिए हमने 2 चीज़ें सोची जो कि कल्चर में डाली जा सकती हैं। द फर्स्ट इज यूजफुल एंड इंस्पायरिंग इनोवेशन। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि हमको इनोवेट करना है, इनोवेट करना चाहिए, इनोवेट करना चाहिए, और हम इनोवेट करके कस्टमर के पास इनोवेशन लेके जाते हैं और कस्टमर कहता है मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, यह मेरे किसी काम की नहीं है। तो जो इनोवेशन हमको करनी है वो हम कस्टमर से पहले पूछ के कि उसकी क्या ज़रूरत है, व्हाट डज ही वांट, एंड देन वी गो टू टेक्नोलॉजी एंड से मुझे इसका एक सोल्यूशन दीजिए। वो इनोवेशन होती है। जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी से होके आती है और हम उसके बाद हम कस्टमर तलाश करते रहते हैं कि इस इनोवेशन का कस्टमर कौन है, वो इनोवेशन नहीं होती है, वो किसी काम की इनोवेशन नहीं होती है। तो विच इज़ वाई वी सेड यूजफुल एंड इंस्पायरिंग। एंड इंस्पायरिंग के माने ये कि जब हम उस इनोवेशन, कोई नई चीज़ बाजार में लेके जाएं तो कस्टमर बोले ओ शिट, आज से पहले इसके बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा। जब तक ये रिस्पांस नहीं आता कस्टमर से तब तक वो यूजफुल और इंस्पायरिंग इनोवेशन नहीं है, तभी वो यूजफुल एंड इंस्पायरिंग। सो वी सेड वी विल, our first pillar of differentiation will be useful and inspiring innovation, and the second thing that a customer should be looking for is, what we want to be to the customer is easy and simple to deal with. कोई हमसे डील करे, कोई हमसे इंटरैक्ट करे, भले ही नया कनेक्शन लेने के लिए, रिमोट कंट्रोल से चैनल ट्यून करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, फॉल्ट रिकवरी करने के लिए, we should be easy and simple to deal with. And easier than yesterday, simpler than yesterday. It is a continuously improving process. उसके बाद हमने देखा कि 3 प्रॉब्लम हैं, और सिर्फ हमारी कंपनी में नहीं, एनवायरनमेंट में जहां पर भी आप जाइए ये आपको 3 प्रॉब्लम मिलेंगी। इंसान बना नहीं था एक दूसरे के साथ काम करने के लिए। यदि आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉलर की इच्छा ये रहती है कि एक कोने से वो बॉल ले, ऑल द वे फील्ड के दूसरी तरफ जाए, गोल स्कोर करे और चिल्लाता हुआ वापस आए। वी आर नॉट मेड फॉर कोलैबोरेशन। हमको बचपन से स्कूल में एक दूसरे के साथ बैठ के टीम्स में काम करना सिखाया जाता है, बट हम सीखते नहीं हैं उसको। बट टेक्नोलॉजी में जो भी प्रोडक्ट कस्टमर के पास हम लोग लेके जाते हैं, आप उसके बारे में सोचिए, आप अकेले उसको नहीं बना सकता कोई आदमी। अगर आपकी कंपनी में कम से कम 6-7 फंक्शन हैं, टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी हो गया, कमर्शियल हो गया, मार्केट हो गया, फाइनेंस हो गया, सारे फंक्शंस आप ले लीजिए, तो
कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेके जाते हैं कस्टमर के पास तो उसमें कम से कम 3 फंक्शन की कोलैबोरेशन लगती है, फ्रॉम थिंकिंग टू डिजाइन टू क्रिएटिंग टू डिलीवरी। कम से कम 3, हो सकता है 4 लगे। अब अगर आप उस फुटबॉलर की तरह काम करेंगे जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाके गोल स्कोर करना चाहता है, तो क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे ढंग से? तो टीम्स को आपस में एक तो कोलैबोरेट करना चाहिए। दूसरे हमने देखा कि हाँ, हमारा वॉल्यूम है, हमारे कस्टमर हैं, बट क्या हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां हमको पहुंचना है? नहीं। कैनवस पूरा वाइट है, पेंट हमारे हाथ में है, ब्रश हमारे हाथ में है। वी हैव इनफ स्कोप टू पेंट द होल कैनवस। एंड जब तक हम नई चीजें ट्राई नहीं करेंगे, वही करते रहेंगे जो हमारे बाप दादा करते आए थे, तो कैसे ग्रोथ होगी? पर लोग डर रहे थे कि नई चीज़ नहीं करेंगे, नई चीज़ करेंगे फेल हो गए तो क्या हमको हमारी प्रमोशन नहीं होगी, हमारी नौकरी चली जाएगी, कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो नई सोच, नया एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करेंगे और उसकी खुली आज़ादी, छूट लोगों को नहीं दी जाएगी, तो ग्रोथ नहीं होगी। तो वी स्टार्टेड मेजरिंग पीपल नॉट बाय व्हाट दे डिड बट हाउ मेनी टाइम्स दे फेल्ड। अगर आपने बोला कि मैं 10 रन बनाऊंगा और आपने 10 बना लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप पहले से 10 रन बनाते थे और आज बोले कि आज मैं हाफ सेंचुरी मारूंगा, तो आप अगर 45 तक भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने गोल में फेल हो गए, बट आप जहां जो कर रहे थे उससे बहुत आगे निकल गए। तो that's what experimentation was about. So we encourage people to experiment. And the third thing, when you ask somebody in your company कि भाई इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है इस काम को करने के लिए, तो 3 हाथ खड़े हो जाते हैं। अब हाँ, 4 लोग एक गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं, बस स्टीयरिंग एक ही के हाथ में होता है। इमेजिन कीजिए कि 4 लोगों के हाथ में 4 स्टीयरिंग होंगे तो गाड़ी कहाँ जाएगी? तो वो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, वो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी या गलत रास्ते में जाएगी। तो भले ही 4 लोग एक साथ एक जगह पर जा रहे हैं एक गाड़ी में, तो स्टीयरिंग एक ही आदमी के हाथ में होना चाहिए और वो ओनर है। उसने बाकियों को कोलैबोरेट करवा के उस गाड़ी को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, और इसको हम कहते हैं ओनरशिप। तो वी सेड कोलैबोरेशन, एक्सपेरिमेंटिंग एंड ओनरशिप इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हम जो कोलैबोरेट नहीं करेगा वो इस कंपनी से बाहर है, वो हमारे ग्रुप का मेंबर नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा उसके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। जो ओनरशिप नहीं लेता है उसके लिए कोई जगह नहीं है, और ये हमारा कल्चर हो गया। और फॉर्चुनेटली ये तीनों शब्द कोलैबोरेट, एक्सपेरिमेंट एंड ओन मिला के सीईओ बन गया, एक वर्ड। तो हमने सबकी डेजिग्नेशन कंपनी में सीईओ बना दी। सो एवरीबडी इन द कंपनी इज कॉल्ड अ सीईओ। सो मेरा काम भी आसान हो गया, सब सीईओ है, मेरे को अकेले को वो काम नहीं करना पड़ता। नाउ दैट डजंट मीन दैट इट इज़ जस्ट अ नॉमेनक्लेचर और हम उसके बैनर लगा देते हैं और काम खत्म हो गया हमारा। ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एवरी डे your peers, your colleagues, if they notice some collaborative activity by you or an experimenting activity by you or an ownership activity by you, they rate you on internet कि भाई इसने ये काम किया जो बहुत collaborative है। This is down the line every level. Every quarter we collate those stories. There is a team that sits down and says हाँ ये अच्छी stories हैं। And then there are about 20-25 people we choose on the basis of best CEO activities in the quarter, and their reward, they call it reward, I think it's a punishment, is to sit down in a room with me for a full day. Nobody else, those 15, 20, 25 people in a room and me, we spend the whole day, and first we understand what they did, what the others did not, because of which they got nominated, and we also ask them what is going right in the company, what is going wrong in the company, and how can we improve it. And you get first-hand ideas from people who are 5 levels away from me or 4 levels away from me. And that's helped me a lot. This has been going on for now about 11 years. Every quarter without fail, और कुछ होना हो ये होता है। लॉकडाउन में भी हुआ ये काम। तो ये दूसरा काम हम क्या करते हैं कि जब एनुअल प्लान हमारा बनता है मार्च या अप्रैल में, तो वी
make sure that the whole document which I present to the board and get approved by the board, we open it out to every member of the company, every individual of the company. We also open this out to our partners, people who are our suppliers, people who are our vendors. उन सब के साथ भी हम share करते हैं. Now people say that the same vendors are working for our competitors. So I said, क्या फर्क पड़ता है? Unless the vendors are aligned with us and they know what our vision is, what our direction is, क्या हम करना चाहते हैं, क्या हमारी vision है, तब तक how will they support us? Because they're a part of us. We also have an open office. We did away with walls and cabins. Nobody has a fixed seat and nobody has a cabin, including me. So all of us sit out in the open and we decide where we want to sit today. So आज मेरा सुबह फाइनेंस के साथ मीटिंग है तो वहाँ बैठूंगा, जहाँ वो बैठा है. दोपहर को मेरे को HR के साथ बैठना है, शाम को मेरे को कमर्शियल के साथ बैठना है. तो हम घूमते रहते हैं उसी ऑफिस में और अलग अलग जगह पर रोज़ बैठते हैं, all of us. So that helps us break barriers and work together. In terms of people, we've got a very diverse lot. We don't hire from one industry. I have got people from banking, from consulting, from FMCG, from consumer goods. We don't hire from media. You may think that ये क्या media company है जिसमें media के लोग ही नहीं हैं. We have 2 people in my team of 12. There are 2 people who have a media background. Technology का तो होना ही पड़ता है. But others are all from various kinds of backgrounds like banking, consumer goods, durables, consulting, whatever background. We have very few layers. When we started, we had about 8 layers. We compressed that to 5, almost 4. And one layer does not report, there is no reporting within the layer. So that makes communication and approvals much easier. That removes all kind of bureaucracy in the company. And one thing I realized, and most of you would have realized in your lives, कि आपको बता दिया जाता है कि आपको क्या काम करना है. उसके बाद अगर आपका बॉस आपके कंधे के ऊपर बैठा हुआ he is breathing down your neck, you don't like it. Nobody likes supervision. So lean structure के माने ये भी हैं कि supervisor कम होंगे. आपको freedom है, आपको बता दिया गया क्या करना है, आप कीजिए जाके. And that's what we believe in. Turnover has gone up 3, 4, 5 times in the last 7, 8 years. The number of people we have in the company has remained exactly the same. We outsourced almost every operation. We insource anything that's related to design or related to quality control. So quality control और design हम अपना company में रखते हैं और जो doing है काम की वो हम बाहर outsource करते हैं हमारे control में, हमारी quality control के साथ. So that's what it is. Customer centricity हमारे खून में है क्योंकि हमने सबसे पहली एक लाइन बोली थी कि कस्टमर जब हमको सब्सक्राइब करता है हमारी सर्विस को तो हमसे बात करने के लिए नहीं करता है, वो टीवी देखने के लिए करता है. तो हम कम से कम उसको मौका दें जबकि उसको हमसे बात करने की ज़रूरत पड़े. एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव्ड इन. फॉर दैट we make sure that everybody across the level listens to calls when they call in the customer center, the customer care center or the call centers. People listen to that, make notes, find out कि भाई इस customer को ज़रूरत क्या पड़ी मेरे से बात करने की. Why did this person have to call me? And then we go into the depth of that matter and eliminate it. Over the period, over the last 5 or 7 years, every 2 years we've been reducing the calls that come to us by half. So today we are sitting on roughly 1/6 of the calls that we used to get 5 years ago. Just by listening to calls, finding out the root cause, why did he have to call, and eliminating that root cause itself, कि भाई ये ज़रूरत ही ना पड़े उसको कॉल करने की, वो टीवी देखे बस. So that's what it is. We also believe, and the last point I'd like to make really is that only the paranoid survive. And I'll give you some examples. आप में से जो लोग मेरी उम्र के होंगे उन्होंने जब शेव करनी शुरू करी थी तो तब वो एक इराज़मिक का ब्लेड आया करता था, सैंडविच ब्लेड हम कहा करते थे. उसको आप रेज़र में फिट, सेफ्टी रेज़र में फिट करते थे और उससे आप शेव करते थे. फिर उसके बाद जिलेट का ब्लेड आया और अब वो सैंडविच ब्लेड तो देखने को ही नहीं मिलते जो हमारे पिताजी और हम यूज़ किया करते थे. आप म्यूज़िक के शौकीन होंगे तो जब आपने म्यूज़िक सुनना शुरू करा था, अगर मेरी उम्र के आप हैं तो आप रेडियो सुना करते थे जो कि फ़िलिप्स या मर्फी का होता था. फिर ट्रांजिस्टर आया जो कि फ़िलिप्स का होता था. उसके बाद आपने
ग्रामोफोन रिकॉर्ड HMV के सुने, फिर कैसेट्स आई T सीरीज़ की, फिर उसके बाद CD आई, और फिर आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक पे आ गए हैं, डिजिटल म्यूज़िक में। आपने नोटिस करा होगा हर एक स्टेज पे, जब काम तो वही है, म्यूज़िक सुन रहे हैं आप, बट जब आपका सोर्स चेंज हुआ म्यूज़िक सुनने का तो ब्रांड चेंज हो गया। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप जब किसी जो ब्रांड मार्केट लीडर होता है ब्रांड का उस कैटेगरी में, वो कहता है बस हम लीडरशिप पे पहुंच गए, अब हमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, एक नया तरीका आता है, और ये टेक्नोलॉजी का जो चेंज है कभी भी लीडर इंट्रोड्यूस नहीं करता है, कोई बाहर वाला आके करता है। ये प्रथा चलती आ रही है कितने सालों से, हर कैटेगरी में। आप फ़ोन में ले लीजिए, MTNL BSNL के फ़ोन हुआ करते थे, उसके बाद अब मोबाइल फ़ोन आए तो एरिक्सन, मोटोरोला, सीमेंस के फ़ोन आते थे। जब वो लीडर बने तो एक नोकिया आया। मुझे याद है 10 साल 12 साल पहले यदि आप किसी एक कमरे में बैठे होते और आप पूछते कि कितने लोग के पास नोकिया का फ़ोन है, तो करीब 80% हाथ उठते कि हाँ हमारे पास नोकिया का फ़ोन है। और आप उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछते क्या इनमें से आप में से कितने लोगों का अगला फ़ोन भी यही होगा, तो सब लोग कहते हाँ मेरा यही फ़ोन होगा। आज मुझे बताइए इस कमरे में कितने लोगों के पास उस ब्रांड का फ़ोन है? नहीं। तो हमारा सोचने का मतलब ये है कि हम अपने आप को नोकिया नहीं बनना देना चाहते, या हम अपने आप को HMV नहीं बनने देना चाहते। उसके लिए हम कॉन्स्टेंटली कस्टमर के पास जाते रहे और हम पूछते रहते हैं कि भाई आप कैसे कंटेंट देख रहे हैं, आप किस फॉर्म में देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हमने देखा कुछ साल पहले कि लोग टीवी के अलावा OTT भी देखना शुरू कर दिए थे। अब हम कहते हैं कि OTT तो हमारा एनिमी है, ये तो हमारा कंपेटिटर है, हम इससे लड़ेंगे, हम इसको मारेंगे। बजाय इसके जब हमको ट्रेंड दिख रहा है कि लोग कंटेंट OTT के द्वारा देखना शुरू कर रहे हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी आल्सो बिकम एन OTT प्लेटफॉर्म इन एडिशन टू अ टेलीविजन प्लेटफॉर्म। So we said we are not a television distribution company, we are a content distribution company. हमको नया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पर कि हम OTT भी डिस्ट्रीब्यूट करें। और जैसा कि टेलीविजन में होता है, लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, लोग म्यूज़िक देखना चाहते हैं, लोग न्यूज़ देखना चाहते हैं, ना कि किसी एक कंपनी की न्यूज़ देखना चाहते हैं, किसी एक कंपनी की, किसी एक ब्रॉडकास्टर की एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। तो हमारा काम क्या था कि हम सबसे कॉन्ट्रैक्ट करते और सामने एक इंटरफेस देते कस्टमर को, जिसमें कि वो प्रेस करता गाइड, प्रेस करता एंटरटेनमेंट, उसके बाद उसको उड़िया में देखनी है, बांग्ला में देखनी है, तो वो प्रेस करके उसको सब ऑप्शन मिल जाती है सब ब्रॉडकास्टर्स के। तो वही चीज़ OTT में भी होनी चाहिए। जब अगर 15-20 ऐप अगर आपके पास होंगी कल को, तो OTT में वही प्रॉब्लम होगी कि हमको तो बांग्ला ड्रामा देखना है। अब हमको ये नहीं कि बांग्ला ड्रामा कौन सी OTT ऐप से देखना है। तो शाम को आप बैठेंगे और 18 ऐप के थ्रू जाएंगे बांग्ला ड्रामा चेक करते हुए, फिर आधा घंटा तो आपको उसमें गुजर गया। उसके बाद देन यू विल डिसाइड कि विच वन टू वॉच। You wasted half an hour. So what we created was a platform called Binge. Those of you who've not got it should try it out. इसमें क्या है कि पीछे भले ही 12, 13, 14 ऐप होंगी, आपको सामने क्या दिखता है, एक रेल में यदि आप बांग्ला कॉमेडी के शौकीन हैं तो आपको बांग्ला कॉमेडी सब में से निकाल के एक रेल में दिख जाती है। यदि आप उड़िया ड्रामा देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है एक ही रेल में सब ऐप से। जब हम इसको लेके गए कस्टमर के पास, तो कस्टमर बोला कि आप तो टीवी बेचते हैं टाटा स्काई, आपको OTT में क्या आपका लेना देना। सो दैट इज़ व्हेन वी डिसाइडेड दैट वी नीड टू बी इन द बिजनेस ऑफ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर इट इज़ ऑन टेलीविजन और OTT, एंड वी चेंज्ड आवर नेम टू टाटा प्ले टू मेक देम बिलीव दैट। और कहने का मतलब यही था कि भाई नाम बदल डाला क्योंकि लाइफ और भी झिंगा लाला। That's all. Thank you. Thank you very much, sir, for those kind and extremely informative words. Ask the question. Can we give a microphone here to the gentleman? I think it takes
decades of experience and grip over an industry to speak with such clarity. Can we have a big round of applause for the great speaker we have for this wonderful session? Okay. Drop a sky. What you asked is, why did Tata Sky become Tata Play? Is there a specific reason to it? Yeah. We were all very happy with the name Tata Sky. Why it had to be renamed as Tata Play? Tata Play. Mr. Nagpal, are we audible to you? There again seems to be some audio issues. The question for you here is, India was very happy with the name Tata Sky. It was very popular. Why it had to be changed to Tata Play? Sir? Can you hear us? Hello, can you hear me, sir? Haridji, can you hear us now? Yes, okay. So it was a very insightful speech. The question I have in mind may seem very elementary, but the question is, what was exactly the roadblock or concern you faced with Tata Sky that you felt the need to change to Tata Play? Like I said, you know, having been distributors of DTH for a very long time, for 15, 16 years, when we went to the customer with a binge or OTT distribution thing, they wouldn't believe us. They said, ये तो ये अलग-अलग चीजें हैं. ये TV distribution तो आप करते हैं, आप OTT distribution तो कोई और करता है. You're not OTT distributors. So we had to change our persona to make them believe that we are content distributors. And if you want to watch TV, we are there. If you want to watch OTT, we are there. And we can also offer you combined packs where you can subscribe to OTT and TV together. Because if you look at any home, you know, if there are 5 people in a home, there are 2 people who are watching only TV, 2 people who are watching OTT and TV. तो पूरी family उठाती है. The TV bill is paid for by the family. But OTT, everybody buys his own. Now, OTT is not cigarettes that somebody should pay for out of his own pocket. That is also content, just like TV is. So why can't we combine the two and let the family pay for TV and OTT together and the whole family watch it? Thank you very much. That was a nice question. Sometimes basic is classic. And whether it's Tata Sky or Tata Play, I think Tata is a brand India has been trusting since more than a century. So Play will definitely play along well. Thank you very much, Haridji. That was absolutely insightful. And we are very much thankful to you for joining us at Foresight 2022. We have to move on to the next session. We are running out of time. Thank you very much. Can we have a big round of applause for Harit Nagpalji? Thank you so much, sir. So moving on to the next session, ladies and gentlemen, आम सहित आज उपस्थित अच्छा जड़े विशिष्ट व्यक्ति जे कि व्यवसाय क्षेत्र में निजर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर निज संगठन को गोटे नुआ दिशा दे पारिछंती. Ladies and gentlemen, joining us, Aditya Prakash, COO Esotech. Please, ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for the next speaker for our business session. Aditya Prakash. Hello everyone. Just to give you my brief introduction, I am Aditya Prakash and I'm the Chief Operating Officer of Esotech Limited. So
Just to tell you more about my company. So my company was started by my father back in 1987. We do have a presence in 7 different states of India. And we have been in Odisha since 2006. In fact, we were one of the first developers to start a group housing project in Odisha called Cosmopolis. And now, once again, we are back with another project. But I won't delve into that anymore. So the topic for today is the winners and losers of the New World Order, disadvantaged. Let's talk about my industry only. बाकी का तो मुझे आइडिया नहीं है उतना. In my industry ना, there are very few winners and very huge number of losers. Just to go back, rewind the past, I'll start with 2016, when our Indian real estate sector was affected by triple trauma, namely goods and services tax, then came demonetization, and then there was RERA Act. And then after that, 3 years later, we suffered COVID-19. So just to reiterate that it was a very stifling situation for this sector. It came to that point that all property transactions were halted when our nation was in lockdown for both the waves. During that time, demand for real estate properties decreased very drastically. ऐसा situation हो गया था that buyers could not meet with brokers and developers directly. Even recovery of existing customers stopped very immediately. क्योंकि banks बंद हो गए, government institutions बंद हो गए, important processes जैसे home loan approval, registration of sale deed, ये सब ड्यू टाइम पे हो ही नहीं पाए. एंड इसी रीज़न की वजह से मेरे इंडस्ट्री के लोगों ने बहुत लॉस और रेवेन्यू फेस किया. इसके बाद ग्रेजुअल रिकवरी भी आई जब सेकेंड लॉकडाउन खुला हमारा, एंड फॉर द 8 months काफ़ी अच्छा स्ट्राइव हुआ टुवर्ड्स रिकवरी. एंड जस्ट व्हेन वी थॉट कि दैट रिकवरी इज़ नॉट टू फार, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, another we were hit with another virus, Omicron virus, which again happened कि buyers again retracted from conducting site visits, and again it led to decrease in property transactions. इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब कोविड-19 हुआ था तो सिर्फ प्रमोटर्स को नहीं इफेक्ट हुआ था, मतलब अक्रॉस एंटायर हायरार्की, फ्रॉम द ओनर्स से लेकर आपसे लोएस्ट सेक्शंस, आपके माइग्रेंट वर्कर्स, everyone was equally if not more affected. I'll just give you a quick example. When COVID-19 lockdown happened, the most vulnerable section of our sector, the migrant workers, they quickly not only lost their livelihood, but they also lost their the chhat unke sar ke upar se, because all construction work was halted and we couldn't start the work without a proper SOP approved by the state government. But सिर्फ migrant workers की दिक्कत नहीं थी, it also impacted very severely blue collar and white collar employees. Situation ऐसा हो गया था कि most of the savings held by these sections of the society went down the gutter. After the market crash of 2020, म्यूचुअल फंड की सेविंग्स थी, लोगों के इधर उधर सेविंग्स थी, सब खत्म हो गई. एंड स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक तो उनको ऐसा सिचुएशन था कि उनको ये नहीं पता था कि पैसे सैलरी आएगी इस बार कि नहीं आएगी, टाइम से आएगी कि नहीं आएगी, और कट के आएगी नहीं आएगी. एंड बिकॉज ऑफ दीज अनअनाउंस्ड वेज रिडक्शंस एंड इनसिक्योर पे आउट सैलरीज, employee morale across the sector crashed. It crashed so hard that most of the veterans of this industry who were working for 10-15 years, they just left the industry. इनको लगा कि अब तो नहीं हो सकता कुछ. पहले ही 2016 में इतना गिर गया था, कोविड-19 और आया, पहली सैलरी नहीं मिल रही थी, अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगी. तो they just left the industry 10-15 साल का काम करने के बाद. ऐसा नहीं कि they weren't happy with the job, they weren't happy with the company. सिचुएशन ही ऐसे हो गया था कि वी कुडंट गेट गुड पीपल टू वर्क फॉर अस.
I'm not talking about just me, but I'm working in 7 different states. It's the same situation everywhere. थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि after COVID-19 market correction, there was a sharp rise in construction cost and cost of borrowing. Raw material prices skyrocketed. मतलब स्टील प्राइस, आपका सीमेंट का प्राइस, आपका एल्यूमिनियम का प्राइस, आपका कॉपर प्राइस सब बढ़ गया. मतलब in some situations the prices have doubled. So already diminishing margins को कम कर रहा था इंडस्ट्री के ये. ऊपर से इतने एवर ग्रोइंग ओवरहेड्स हैं हमारे कि कुछ इंसेंटिव ही नहीं है यहाँ पे और काम करें. So I came to Odisha back in 2018 and this is what I saw. रॉ मटेरियल प्राइस तो पहले भी बढ़ रहा था, बट मैंने यहाँ पे देखा कि देयर वाज अ ह्यूज सप्लाई गैप. देयर आर पीपल हु वांट होम्स, हु वांट क्वालिटी इन्वेंट्री, बट देयर आर नो गुड सप्लायर्स ऑफ दीज होम्स. और है तो इट्स नॉट इन अ प्रेफर्ड लोकेशन, इट्स टू आउट ऑफ कंट्रोल, देयर आर लॉट ऑफ हिडन कॉस्ट्स. नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन साइड इफेक्ट ऑफ कोविड-19, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी लीजिए इसको, कि a lot of black transactions were stopped because of zero contact measures and social distancing policies by the state government. And जितना मैं सोचता हूँ, probably after 2020, most of the money flowing into the realty sector has been white. Another byproduct, I think, is that all the non-serious players of this industry now, जो आ जाते हैं, आई एम श्योर आप सब यहाँ पे काफ़ी घर तो सबने ख़रीदा ही होगा, तो आप सबने फेस किया होगा ऐसा कभी ना कभी सिचुएशन कि द पर्सन हु सेलिंग यू द प्रोडक्ट या घर आपके सामने, वो आपको क्रेडिबल नहीं लगता. आप विश्वास नहीं होता है कि वो बना पाएगा या सारा अप्रूवल हो पाएगा, या कुछ ना कुछ दाल में काला लगता है. सो आफ्टर कोविड-19 मार्केट करेक्शन, मोस्ट नॉन सीरियस प्लेयर्स वर किक्ड आउट ऑफ द इंडस्ट्री. So this in turn led to a sharp rise in quality of inventory which was available in the market, and market went into a consolidation phase, which also increases the credibility of the industry as a whole. Coming back to the migrant workers, थोड़ा सा और मुझे बोलना था उनके बारे में कि जब situation इतना dire हो गया था उनको लेके, most of the labor contractors, subcontractors who employed majority of these laborers, they didn't have the motivation or the resources to help them out. But this is where I'll say the state government of Odisha has been very commendable, very proactive. They collaborated with the official body, real estate body, CREDAI of the Odisha chapter. And they organized multiple successful campaigns for these migrant workers. They made sure that they were compensated for the loss of work. They gave out free rations of food and made sure that all the health and awareness related training that needed to be provided to them, all the hygienic products like sanitizers, masks, was properly distributed to them by the state government. नेक्स्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा सा और मार्केट के ऊपर. जब डिमांड रियल एस्टेट का गिरा आफ्टर कोविड-19, एक और ट्रेंड में चेंज आया. ट्रेंड में ये चेंज आया दैट पीपल स्टॉप्ड बिलीविंग कि हमें एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग में रहना चाहिए, या हमें बंगलों में रहना चाहिए, या विला में रहना चाहिए. एक नया ट्रेंड निकल के आ रहा था कि जब ऐसा सिचुएशन आ ही गया है कि 2-3 महीने घर पे बैठना पड़ेगा, तो क्या करें? हाउ डू वी मेक श्योर दैट आवर चिल्ड्रन का कोई फ्यूचर सफ़र नहीं कर रहा? हाउ डू वी मेक श्योर कि हमारा फ्यूचर सफ़र नहीं कर रहा? तो हमने ट्रेंड देखा कि ग्रुप हाउसिंग की तरफ ज़्यादा लोग अब इंक्लाइन हो रहे हैं खरीदने के लिए घर, एज कम्पेयर टू स्टैंड ऑन विलाज या अपार्टमेंट्स. वो भी इसलिए क्योंकि एक ग्रुप हाउसिंग में a normal family gets all the amenities and facilities जो उनको चाहिए अपने बच्चों के लिए, जो उनको चाहिए खुद के लिए. लेट्स से योगा क्लास हो गया, आपका ट्यूशन हो गया, कराटे क्लास हो गया. एक नॉर्मल आप घर में रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, स्टैंड ऑन बिल्डिंग में रह रहे हैं, आपको ये सब नहीं मिलेगा. और यही चीज़ बहुत फेस किया लोगों ने आगे चल के कोविड-19 में. दिस इज़ वाई वी सॉ कि लास्ट 2020 से लेकर अभी तक वी बिन promoting our new project, we saw a huge demand for our kind of product. Not just ours, multiple other builders जो हमारे साथ काम कर रहे हैं भुवनेश्वर में, they also face the same kind of reaction. The demand for their product काफ़ी बढ़ गया. As compared to before COVID-19, इतना ग्रुप हाउसिंग का नहीं चल रहा था डिमांड.
most people were going for सस्ता है, budget है, तो आप ले लो. Will not shell out 10 lakhs, 20 lakhs more कि एक अच्छा हम लोग group housing में घर ले लें ताकि 20 साल, 30 साल next अच्छे से निकल जाए. But ये pandemic के बाद ये बहुत बड़ा I think एक factor था which is driving the real estate sector, especially group housing, residential properties. Last मैं बस ये बोलना चाहूँगा that the state government of Odisha has been very proactive and concerned about our industry problems, and this collaboration between CREDAI and the state government has made sure that the other problems being faced by in different states of India, जैसे झारखंड, यूपी, हरियाणा में, there are lot of problems. And here Odisha में these recession-based symptoms have not been seen in this sector. The prices have been growing very healthy, and the demand is growing over the years. It's almost 18% year-to-year increase of demand. Price is almost reaching 10-12% per annum. So there's another reason why Bhubaneswar did not see the same recession even after COVID, even after triple trauma of 2016, is that Bhubaneswar एक ऐसा शहर है जहाँ पे all over world से लोग आते हैं property खरीदने. Whether you're an Odia, whether you're a Punjabi, whether you're a Bengali, a lot of people want to buy a home here. Not just for कि यहाँ पे घर है, हमारा family बाहर है, जब आएंगे तो आके रह लेंगे, but also because this is now quickly becoming an investment hotspot. Bhubaneswar market last 10 years से मैं बोलूँगा कि was stagnant. And last कुछ ही सालों से रेरा जब से भुवनेश्वर ओडिशा में काफ़ी एक्टिव हो गया है, अपार्टमेंट एसोसिएशन काफ़ी एक्टिव हो गया है, उसके बाद से मैं बोलूँगा कि देयर हैज़ बीन अ वेरी इट्स अ हॉट केक दिस मार्केट. जस्ट टू कंक्लूड, जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, देयर इज अनदर एलिफेंट इन द रूम, द डिले इन पोजेशन. इट्स बीन फेस्ड अक्रॉस द नेशन इन माई इंडस्ट्री. So my company has been very, let's say, attentive to this matter, that we have brought a new technology. It's a Korean technology. It's called My1 technology, aluminum shuttering technology. We've made sure that the major issue that the home buyers faced, कि घर नहीं मिल रहा टाइम से, EMI हम लोग दिए जा रहे हैं, क्या करें, इतना तो पैसा नहीं है किसी के पॉकेट में कि indefinitely देते रहें. तो ये डिले इन पोजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक कन्वेंशनल काम करता है कोई कंस्ट्रक्शन में, तो उनको 3 छत डालने में इट यूजुअली टेक्स अराउंड 2.5-3 months, 3 फ्लोर्स डालने में. बट यूजिंग आवर टेक्नोलॉजी वी हैव मेड श्योर दैट वी कैन पुट 3 floors ऑन इन द स्ट्रक्चर इन 1 month. दैट कम्स आउट टू 10 days फॉर 1 floor. एंड इस तरीके की टेक्नोलॉजी में ना कोई ब्रिक वर्क का इस्तेमाल नहीं है. देयर इज नो ब्रिक वर्क यूज्ड. आपकी वॉल से लेकर फ्लोर सब आरसीसी होती है. सो कोई प्लास्टर नहीं करना, सिर्फ पुट्टी कर देना है, अनपेंट कर देना है. इसके बाद ये जो सारा, दिस इज नॉट ओनली हेल्प्स इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट फास्टर, बट जैसे सदगुरु जी से बोला कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ मोर क्लीनर एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. तो इस तरीके से लॉट ऑफ जो मलबा निकलता है, आप नॉर्मल कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन करते होगे, आपने देखा होगा, आप बहुत सारे लोगों ने घर बनाया होगा अपना, तो बहुत मलबा निकलता है, बहुत आपका कचरा निकलता है एक बार काम कंप्लीट हो जाता है, स्पेशली आफ्टर फिनिशिंग. ये सब चीज़ें ये टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है. आपका कोई एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं होता है इसमें. और जो भी ब्रिक वर्क बनता था वो पहले आपका अनकन्वेंशनल तरीके से इलीगली एक्वायर हो जाता था, जिसकी वजह से एनवायरमेंट पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता था. Especially for a product जितना बड़ा हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, it would have made a huge dent in the environmental causes that Sadhguru ji was talking about. So we've also made sure कि construction सिर्फ हमें करने के लिए नहीं करना, हमें करना है इसको sustainability के लिए. That's just my last piece. Thank you everyone. That was a very matured address for a young COO. Thank you. May I request MD and co-founder, OTV Network, Srimati Jagimangat Panda, to please present a small token of love to Aditya Prakash, COO, Esotech. Big round of applause. Esotech has already created a lot of buzz in the Twin City. People are excited about Esotech Pride. So all the very best to the entire family, and wish there are more endeavors
for Odisha in future? So, moving forward, we have a interesting session coming up, a small session, but an interesting one. We'd like to ask our audience that why do you think property prices in Bhubaneswar are higher to similar cities, if you consider cities like Bhubaneswar in the country, but why do you think property prices in our state, the capital of Odisha, Bhubaneswar, are higher? So this If is anybody want to answer this, we'll request with a mic jodi forward karajibo if somebody wants to answer this question. whatever your view is, you can introduce yourself and Yes. answer to this very simple question, which is not our opinion. So your which is a thoughts fact. is it can be your opinion as well. What do you think? Yes. Namaskar. Myself Jeetu Satpathy. I'm basically a cricketer and turned into a real estate consultant for last 15 years in Bhubaneswar. So sir has a very good presentation regarding Esotech and the background of the total industry. And thank you so much. I have a small question that he has asked that the price in Bhubaneswar is very much higher compared to all two-tier cities in India. बट एक ही बात ये है कि इसका मेन रीज़न है लैंड कॉस्ट एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़. आपको ऐसे लिटिगेशन फ्री प्रॉपर्टीज़ मिलना भी बहुत मुश्किल है और जो कि आपको गैदर करके एक प्रोजेक्ट बनाना कितना मुश्किल है, ही नोज बेटर. सो वी फाउंड ऑल दिस डिफिकल्टीज. बट एक ही छोटा क्वेश्चन है सर के लिए. द प्राइस यू हैव कोटेड इन द मार्केट राइट नाउ, ये कंपेयर्स द टेक्नोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे आप बना रहे और जैसे प्रीवियसली था और अभी जो बना रहे और लैंड कॉस्ट एट द अदर कॉस्ट, एक्चुअल व्हाट इज द मार्जिन यू शुड कीप और एल्स आप अभी मार्केट में डिमांड है बोल के यू आर राइजिंग द प्राइस. सो is that the reason? That is the question. Thank you. Okay. Can we give a microphone to Aditya, please? That's like one professional asking another a very important question. Can you hear me? So I'll quickly address your question, sir. आपका क्वेश्चन था प्राइसेस हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं, नॉट जनरली क्यों ज़्यादा है, हम लोग क्यों बढ़ा है, हमारा क्यों ज़्यादा है. सो दो तीन फैक्टर जो मैंने पहले भी बोला सर. एक तो जैसे आप ही ने बोल दिया, लैंड कॉस्ट इज़ वेरी हाई. ऐसे भी सर आज के ज़माने में किसी भी डेवलपर के पास, अब टॉप लोगों छोड़ दीजिए, DLF गोदरेज को हटा दीजिए, इतना पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है पॉकेट में आज की डेट पे कि वो लैंड आउटराइट खरीद ले लैंड ओनर से. तो व्हाट वी डू इज़ वी गो इनटू अ JD मॉडल, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट मॉडल जाते हैं. एंड जितना आप शहर के अंदर करेंगे, ये मॉडल करेंगे, उतना ज़्यादा आपको परसेंटेज देना पड़ता है लैंड ओनर को. तो आप शहर के अंदर जैसे करेंगे, आप 50% से नीचे कोई नहीं मानेगा. आप शहर के जितना बाहर जाएंगे उतना कम होते रहेगा. हमारे केस में उसी के बीच में कहीं आ रहा था, 50 से नीचे आसपास. बट दूसरा चीज़ मैं आपको एग्जांपल दूंगा. जैसे मैंने बताया, रॉ मटेरियल प्राइस बहुत बढ़ गए हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एल्यूमिनियम का प्राइस अभी अराउंड 6-6.5 हज़ार रुपये चल रहा था. अभी रिसेंटली मैंने एक परचेज ऑर्डर अभी दिया है अपनी कंपनी का, उसका मैंने कोट किया है प्राइस, एंड आई एम नॉट किडिंग, 12,000 रुपीज़ चल रहा है उसका. इट्स डबल्ड. सीमेंट का आज से 6 महीने पहले सेम सिचुएशन था. अब चीज़ क्या होती है ना कि आप आज देख रही है कि प्राइस बढ़ा है, मैं आपको बताऊं तो बल्कि प्राइस कम है. मैं आपको बताता हूं क्यों. मान के चलिए आज आपने मुझसे फ्लैट ले लिया एज अ सर्टेन प्राइस, करेक्ट. अब कॉस्ट जो आपका फ्लैट का है बनाने का, वो तो फिक्स नहीं है, वो तो आज के मटेरियल प्राइस के ऊपर बेस्ड है. अगर मैं रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, मेरा मार्जिन वैसे ही कम हो जाएगा. बट मैं आपसे तो वो प्राइस नहीं बढ़ा सकता हूँ एक बार आपने खरीद लिया तो वहाँ का ब्रंट तो फेस करते डेवलपर्स, अभी कर ही रहे हैं. दूसरी चीज़ मैं क्या बोलूँगा कि जो माइवन, जैसे मैंने आपको बताया, दैट टेक्नोलॉजी वी आर ब्रिंगिंग एंड वी एक्चुअली कंप्लीटेड आवर फेज 1 बिकॉज ऑफ दैट, कि इसका इट्स वेरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. मतलब अपफ्रंट आपको बहुत पैसा देना पड़ता है. एंड नाउ डेज बिना, और ये ऐसा है ना कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए आपको, फिनिशिंग करने के लिए नहीं चाहिए. और बैंक्स का क्या होता है यूजुअली रूल कि आपका कंस्ट्रक्शन से पहले कंस्ट्रक्शन फाइनेंस देना बहुत ही मुश्किल. वेरी फ्यू बैंक्स आफ्टर आपको डबल देना पड़ेगा अपना कोलैटरल, तब जाके देंगे. तो किसी के पास है ही नहीं इतना रिसोर्सेज करने के लिए. इससे अच्छा मार्केट से पैसा ले लो बुकिंग करवा के.
So these are few reasons कि क्यों price हमें बढ़ा के रखना है. और issue क्या है ना sir? आज की डेट पे the price is not that major issue. The major issue is possession. People are willing to pay 10 lakhs, 20 lakhs more. पर अगर उनको time से घर मिलता है तो they are ready. So that is just my two piece. Thank you. I think we have another question, so please. Hello, Aditya. This is Sakti Mohanty. So I have an allegation against you, and take it very sportively and friendly. And I liked your talk. You are really building quality products, quality homes. But I have a question that you have already snatched, taken away Chandni. You have taken away all the Chandni from our life. You have snatched sunrises from our life. You have snatched sunsets from our life. And you have minimized the sky I view usually. So what is your take on this question? Because 20 years after, all the builders will get a question. People will come to the roads and will ask the builders that you have taken all these sunrises, sunsets, and Chandni and skies from our life. Thank you. Sir, I'm so sorry. Like, I think Aditya will address your concerns on like a... No. He has to answer it. No, because he has to answer because he's a very promising builder. And I have, as a taker, I have all the rights to ask the question. You can't stop me asking questions. Thank you so much, sir. We can have a one-on-one during lunch. But as a common person, if I have to really give my opinion on this, I will say somewhere overpopulation has to play a bigger role. If you are too many people, eventually you will live in an apartment and you will live like virtually, vertically than horizontally. That's the future and nobody can actually change that. Okay. There are some senior journalists also sitting here, so in the audience. We'd like to know from you, sir, also, if you can share your view, why this thing is happening in India. Access, how is there? Excuse me. Excuse me. Okay. May I ask a small question? Yes. I think the price of Bhubaneswar land price is increasing because of the wrong approach by the builders and the government combined. Number one, Bhubaneswar total land properties, whatever are there, it belongs to government, mostly under the GA department. Say, for example, Unit 1 or Unit 2, we can take only any unit. Small quarters are there, where at least 1/10 of the area can be converted to multi-storied buildings, and the total things can be accommodated. Another mistake is there by the government. They are declaring one after another the site for international airport. Say, for example, near Khordha, Jankia, this, that, all that. Now they are planning for Puri. Unnecessarily, the price hike is being made by the builder and the government combined. So they don't have any specific planning how to minimize. The total population of Bhubaneswar is not more than 12 lakhs. Right. Why it will be spread to that extent and there will be no space for the common man to live over here? So my question is, let the builders have their different approach the government to demolish these small quarters and to go ahead with the multi-storied buildings. The cost will be theirs and it will be cheaper. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for sharing your opinion with us. I think आमे चाहिबो कि आजी जो जनता आम सहित अछंती तांकर गोटे मेजर रोल रहू ए कॉन्क्लेव को सफल करिबारे. So we have a hypothetical question that I just want to supplement, sir, the straight answer to your question is that land availability is a major concern in Bhubaneswar. You have part of a city that comes under heritage zone, and in north of the city it comes under flood zone, and there is a little scope for the developers to acquire land. That's the major concern, because we don't have adequate land in Bhubaneswar. And other parts of the city you find that the lands are litigated. So the land record is not properly documented, and the process is on. And I have a small question for Aditya. When many developers are there, when now that Esotech has rolled out some products, there is a beeline of customers for your products. But there are developers, those who are approaching customers to sell their products. What is your competitive advantage or USP that make customers, that actually force customers to make a beeline for your products? Okay. We
we do have a one-on-one session after this. So let's finish this session and then we can move sort on. of time. Yeah, So thank you. we are moving forward. We have one more question, another interesting one. We are coming to you. Please, Lugna, if you can. Well, I think जदि आपण मानक पचरा जाए आगामी फोरसाइट रो थीम कौन हबा उचित, you have the power to decide that. बा जदि एई वर्ष ही आपण मानक निष्पत्ति नवार थिला जे फोरसाइट रो थीम कौन हेई परिथांता, ताहले आपण माने से थीम को कौन रखिवा पई बेसी प्रस्तुत हेइथांते बा बेसी आशा करथांते जे फोरसाइट रो थीम या हवा उचित थिला, जदि की कहिवा पई चाहंती. We are expecting some interesting answers. बहुत बुद्धिजीवी Okay. अछंती. Yes. Okay. Yes, yes. आपणको मतरे फोरसाइट रो थीम कौन हबा उचित? Okay. आमे We एजुकेशन appreciate, yeah. संपर्क रे चर्चा भी करिछु. So we are in sync with your opinion. We spoke about digital education, तारो importance and future. अच्छा. निश्चित भावरे we are noting that mobile is becoming an addiction. Anybody else? That's all. Okay, that's all. You want to talk? Thank you, thank you. Okay. Namaskar everybody. I think there is so many topics has come to your mind when you talk about foresight, because this is when it is foresight. Tenu being an actor, something I would have really definitely you should talk about our cinema industry, and also in addition to that, I don't know why you have not included politics this time, ma'am. Not good. Pinky, you should join us for the post-lunch session. Both your questions will be answered. I'll try for that. Thank you. It seems we quite read your mind, and we have something very surprising and informative for you, especially and everyone who agrees with your opinion. Amara post-lunch session re apanku rajaniti bhi milibo, au cinema samparkiya tathya bhi milibo. Thank you. I think there is another gentleman here who wanted to say something, and the lady. And if you can make it short, we are actually running out of time. Maybe health in education, because Odisha people mostly facing the challenges in this lockdown. 2 years, we are facing a lot. Thank you. Thank you. We agree. Thank you. Education. Yeah, education. I'm Lily Janamani. Yeah, thank you. So I have two persons saying कि education को theme We have another person. Sir, please, you can add your opinion. I would like to ask the audience, mo opinion रे ओडिशा भाषा लुप्त होवा को जाउची, कारण present generation अधिकांश ना पढ़ी पारुचंती ना कहि पारुचंती. What are we doing about it? How are we planning to address this issue? Definitely very good point. भाषा निश्चित भाव आम कहीपर जे गोटे प्रभावशाली टॉपिक जहाँ पर आलोचना माने समस्ते करवा उचित कोठ ना कोठी, कारण जो युवपीढ़ी माने सामना को आसुचंती बहुत क्षेत्र रे कथा देखिबा पय मिलुची. भाषा गोटे बड़ टॉपिक भलो टॉपिक हेई पारे. निश्चित भावरे. Anybody? Hello everybody. So this is Sugyani. I'm an IT consultant currently working in Ernst & Young. Previously I'm an ex-Infosyn. So I think this Foresight is such a great platform and such a great program for all our young minds as well as for all the age groups. It's such an educative platform. I believe the next session of Foresight could be a topic on nation building. So nation building especially for our young minds, because I think the young minds shape our future, our nation's future, and India is what with our young minds. So I would like to talk about like the nation building and how we can, like what sir said, like the importance of our language Odia and the mother tongue and influence and everything. So, and making our young minds especially realize the, you know, the importance of our soil, our country, our state. Yeah, this thing. So well put together. Thank you very much. Thank you. Okay, he nijara. Yes. Mic. Yes. Okay. Thank you. आसंता वर्ष पाई मु कहबी आपण जे चिंता करिवे जे जोड़िए बड़ समस्या जे हमर पिछा छाड़ुनी ता उपरे आलोचना पाई से होची गोटे स्वास्थ्य हेल्थ केयर आरटा होची बेकारी हाउ टू
address these problems. गणेश्वर बाबू जदि आम यही वर्षर कहवा आपन ताले कौन विचार करछन जे एई वर्ष आउ कौन करथिले भल हेई पारथांता बोली बा आपन को लागुची एई वर्षर समस्या जहा को एई वर्ष आलोचना करिवार थिला nothing like that, everything is appreciated. Thank you. धन्यवाद जड़े शुभेच्छु ही एक कथा कहि परिबे सब बेले आपन को मार्गदर्शन आम पई जरूरी थिला और रहइबो या एक्चुअली मु जहाँ कहवाई चाहूँगी गणेश बाबू अलरेडी टिके हिंट्स देदेले ए वर्ष जहाँ भी मुझे आशा करूली जे वर्तमान जो अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द कंट्री हैज गॉन स्टार्टअप मान को केमिति प्रोत्साहन दि जाय परिबो एम्प्लॉयमेंट केमिति क्रिएट करा जाय परिबो जेते इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ थिला बर्तमान प्रायत सब स्क्विज हो गलानी ऑलमोस्ट बंद हवा भली MBA कॉलेज रे भी से भाया स्थिति तेणु एसबुड़ केमिति आम रिवाइव करि परिबा इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफरेंट एरिया रे आम केमिति देई परिबा लास्ट 20 इयर्स कथा कहवा एभलिया किछि से भाया किछि आखि दृष्टिया किछि इंडस्ट्री ओडिसा रे भी हेइनी जोटा कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिबो आम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कथा कहि परिबा प्लस इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट गोटे इंडस्ट्री जदि गोटे होउची इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मोर आई थिंक 20 टाइम्स क्रिएट करुच्ची 20-25 टाइम्स तेणु से भाया स्थिति बा से भाया डिस्कशन जदि हो पारि था मु भावुची किछि बेसी माने सरकार होंतु बा आपनकर एंटरप्रेन्योर्स होंतु से किछि मोटिवेशन आसी पारि था जोटा कि आम कहि परिबा टाटा प्ले रो जो भी सीईओ जो देउथले फीडबैक जो भी तांकर व्यूज इट वाज रियली इंस्पायरिंग सो मेनी थिंग्स इट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट many people can come together so that nation building रे बा अपन state building रे job creation is much more important. Thank you. Startup can be very good. Yes. Thank you. Can you have mic? I think we are done with the Q&A session. Okay, if they allow one more question, I'll give the mic to you. Yes, thank you. More actually got a question प्रश्न अच्छी since एठी बहुत knowledgeable audience अच्छंती आ ए प्रश्न मो माइंड रे बहुत वर्ष माने जो जेते बळे मु ओडिसा आसिली about 26 years ago आ सब बळे मो माइंड रे क्वेश्चन थिला perhaps आपण माने एठी अच्छंती जो माने हमको कहि परिबे और कैन गिव मी योर ओपिनियन ऑफ व्हाई दिस इज सो मु सब बेले देखि छी अनलाइक स्टेट्स लाइक गुजरात जोठी एंटरप्रेन्योरशिप एंड गोटे एंटरप्राइज जो करिबार इच्छा अछि लोकंकर बहुत थाए बट ओडिसा रे आई हैव नॉट सीन दैट एंड एबे अवश्य नाउ आई मस्ट से कि आफ्टर 26-27 years ऑफ बीइंग इन ओडिसा मु देखुची से चेंजेस ता होची ग्रेजुअली किंतु आपण को मतरे काहे कि वी आर नॉट एबल टू बिकॉज जेमतिया कहंती गुजरात इज नॉट अबाउट एनीथिंग बट द पीपल ऑफ गुजरात द गुजरातीज बट कैन वी से द सेम अबाउट ओडिशा इज ओडिशा अबाउट द हार्डवर्किंग एंटरप्रेन्योरियल ओडियाज और एम आई रॉन्ग इन थिंकिंग दैट वे मैडम आप बहुत भल कथा गोटे कहले सेटा को गोटे क्लू नहीं कि मुझे कहना चाहूँगी आगुरी भी भाभी मो ना हूँ मनोरंजन मिश्र मु ओडिशा एनवायरनमेंट सोसाइटी जॉइंट सेक्रेटरी अच्छी गोटे प्रधान विषय हूँ आम सब कहूँ अन्य माने कौन करें जेकोसी गोटे थीम नियंतु आपण कौन करें सेटा मु बहुत भलकरी कहीपरि what others are supposed to do. Can we just bring a change in this? What I can do? The time has come. बर्तमान समय आम पाखर आसी आमे प्रत्येक इंडिविजुअल आमे कौन करि परिबा बर्तमान पंच महाभूतर तीनोटी महाभूत ऑलरेडी अफेक्टेड हो साराणी जोटा कि आम सद्गुरु शुणिले माटी पानी पवन आउ दुईटा महाभूत रहिला जोटा गले पृथ्वी ध्वंस हो
तेणु गोटे थीम को नहीं करी से एजुकेशन हो कि नेशनल नेशन बिल्डिंग हो कि एनवायरनमेंट हो गोटे थीम को नहीं करी ता देहरे गोटे पंच लाइन आम दबा मु कौन करी याद तेणु यहीटा गोटे जनजागरण भाव गोटे स्रोत सृष्टि हम तादर किछिटा परिवर्तन निश्चित भाव में आसो जदि एंटरप्रेन्योरशिप नवाक चाहते आम ओडिया जाति को ऊपर उठाइक चाहते आहरी एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरियल रोल प्ले करवा दरकार then okay fine let us take that as a theme and mu kon ta dere karibi what I can do instead of looking at others or looking at the government or anything. Gujaratis are not everything is done by the government. Yes, policies are there, but there is a general awareness amongst the people of that state, so we can also think in the same line. Okay, this is my another point with respect to the Esotech. Very quickly I will say Bhubaneswar is facing big problem on hot skills of maintaining the large societies because Esotech will bring high-end technology. They will build it and then go away. But who will maintain it? Who will run it? There is a severe scarcity of technicians in and around Bhubaneswar. You go to any apartment, there is a problem. So this also needs to be addressed. Thank you. Yes, regarding Jagi ma'am's question, ମୁଁ ଟିକେ आंसर देवा ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି बेसिकली आमे ओडिया माने बहुत बढ़िया किंतु प्रॉब्लम अच्छी जे आमे जो मैडम कहते गुजरात कहीं आगे अच्छी ओडिशा कहीं पछरे अच्छी बिकज गुजरात रे आपण देखिए जो 3-4 जेनरेशन पूर्वर दे आर बिजनेसमैन मु जेतबेले बिजनेस करिया को बाहरली मो फादर केबे भी जदि मु जोड़े ऑप्शन रखिबी बाबा मते किछि पैसा दियंतु मु बिजनेस करिया जाउची बाबा कहे नाही से पियन चाकेटे हो पछक सेठी जाए तो से माइंड सेटा जो अच्छी सेटा को आस्ते आस्ते आम चेंज करि पारु नांती वर्तमान नो डाउट किछि बिजनेसमैन अपकमिंग आसिलेनी एवं आमे कलेनी सो आगामी थीम हमर हबा दरकार फोरसाइट रो कि हाउ टू बिकम ओडिशा नंबर 1 नॉट सीएम नंबर 1. ठीक अछि. Thank you very much. I think प्रोत्साहन आवश्यकता अछि वी एग्री. मैम को जो डाउट थिला काहे कि एटा हे पन्ने गोटे कथा ऑडियंस आछंती एवं आज कोटी कोटी लोक भी देखुचंते ओडिशा इज द ओनली स्टेट जार गोटे आम जानिचे तार मैरीटाइम हिस्ट्री अच्छी ओडिया पीपुल आर मोर एंटरप्राइजिंग इंजीनियरिंग वाइज आप देखिए आम ये इंजीनियरिंग जो मार्वेलस आम ये मोनुमेंट्स तैयारी करचे एटा कोठी भी नाही एटा होचे ओरिजिनल उत्कलीय ये इंजीनियरिंग आप देखिए निकट अतीत आपंकर एएसआई जे चीफ आसीते ही वाज सरप्राइज टू फाइंड दैट आमर ओडिशा रे भी आपंकर 600 इयर्स एगो आम सेठी जो लुहा यूज होइचे आयरन बीम एवं आम एत एंटरप्राइजिंग थिलु जाभा बन्यो सुमात्रा आम सेठी जाउथुलु एवं ट्रेड एंड इंडस्ट्री रे आमर प्री हिस्टोरिक एज रो इंडस्ट्री थिला किंतु नेक्स्ट जतले फोरसाइट आपण डिस्कशन करबे सेट गुडा डिस्कशन पॉइंट हो जे जतले प्री हिस्टोरिक एज रो आमर गोटे ग्लोरियस ट्रेडिशन ट्रेड ट्रेडिशन थिला इन बिटवीन व्हाट हैपेंड जे गोटा स्लॉथनेस आसिला एवं आमर जो स्पिरिटा एंटरप्राइजिंग स्पिरिटा सेटा ह्रास पाइला एगेन वी आर री इमर्जिंग एवं आमे वी आर असर्टिंग आवर लीडरशिप बोथ इन एंटरप्राइजेस एंड अदर फील्ड्स ऑल्सो जब इन बिटवीन व्हाट हैपेंड जे ओडिया भितर ए भाया स्लॉथनेस आसला किंतु इट्स ए नोशन मैम जे आमे ओडिया वी आर मोस्ट एंटरप्राइजिंग पीपल इन द कंट्री एंड वी हैव. थैंक यू एवरीवन फॉर योर ओपिनियंस. थैंक यू मैम. धन्यवाद आम ऑडियंस को एते सुंदर निजर मत निजर समालोचना तर्क सबू आज रही कॉन्क्लेव रे प्रस्तुत कले. समस्त को नमस्कार. मैडम जो क्वेश्चन कर गोटे कथा कहबी बोधे ओडिया मान को बहुत लाज लगे. प्रथम कथा कहबी आम जो बाहर को जाऊँ ओडिया रे कथा कहबी हमको लाज लगे. अपन देखिए कलकाता स्वाभिमान आम जो स्वाभिमानी हवा दरकार ओडिया आमर एत सुंदर भाषा आम संस्कृति एत सुंदर आम जो बाहर को जाऊँ कलकाता जाऊ हैदराबाद जाऊ सेठी अपन जिते बड़े कैब ड्राइवर मान संगे भी आप इंटराक्ट करेंगे से लैंग्वेज कथा कहती इवन ओडिशा रे मध्य अपन जो कैब ड्राइवर से कहे मैडम मु हैदराबाद रू आसी मुझे थोड़ा थोड़ा ओडिया आता है किंतु लेकिन आमे जिते बड़े जाऊ आमे इंग्लिश रे कहबो अधा खंडिया बंगला रे कहबो किंतु किंतु आमे ओडिया रे कहबोनी. प्रथमे जेमती सर कहले आमे प्रथमे हम भाषा को सम्मान देबा उचित. हम भाषा को सम्मान देले निश्चित ओडिशा नंबर 1 हबो. बहुत बहुत धन्यवाद. मातृभाषा प्रेमटा मन रखले हेनी देखा दरकार. दोज वे वेरी
special, I think, feedback jahako ame sabubale mane rakhibu for the forthcoming editions of Foresight. I think ete sabu suchana samalochana tarka pari bhoko to nishchay lagibani. So we are off for lunch break. Enjoy your lunch and let's come back here for more enlightenment. We'll meet here at 2 for the next session, and I'll not forget to thank our sponsors again. OTV Foresight 2022, presenting sponsor Jupiter Public School, co-powered by Panasonic Air Conditioners, supported by IMFA, co-supported by SRM Group and MGM Minerals, associate sponsors Paradeep Phosphates Limited and Jindal Steel and Power Limited. Thank you everyone. Thank you. Enjoy your lunch. Thank you everyone.